I smell rabbit. There are so many local specialties in Sumeru. I want to buy more. Oh, here she comes. Satori is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to feel kinda nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. The gods are asking, Setaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Setaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And, if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, King Deshret. King Deshret? No wonder he would make such demand of me. Wait a second. King Deshret passed away a long time ago. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can King Deshret still exist in real life? What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait!
She just ran off in a hurry. She looked pretty upset, too. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harvard-taught theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. He's out of games now, right on cue. Let's get ready to possess him right away! It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean... you've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this! You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Come on! Sataria's already started talking with Shishan! So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Wait, did you just say attic? I thought this place didn't have an attic. Also, don't you usually study in the basement? Well, the restaurant recently added an attic. I've been studying there because it has better lighting. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to King Deshret as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed?
You, who worked side by side with the academia and treated people as nothing more than experimental subjects. Please, please. Even now, Satori is still trying to run from her problems. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of King Deshret? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous?
Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. Alright, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the God of Wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side! The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of Wisdom and Guardian of the Scholars? No. The truth is the true Guardian of Scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. I'm hungry. Let's hunt. Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's quiet.
You're not getting paranoid, are you? No, I think she's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. Huh. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, and that Sataria managed to distract all the guards. This hour of the night. Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the Academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the God of Wisdom. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon
wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the Academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep, sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah, now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the Academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? You mean... Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia Forest? That has to be the same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the Academia? But why wouldn't the Doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! You're up, Traveler! Following orders. New punching bag. Nice and spicy! Rain outlines your fate. Cool it. Take that! Keep that! That's close enough. New punching bag. Don't get frostbite. Dodge this. Witness the power of Gurwa. Get back! Get back! It isn't over yet! Here comes reinforcements!
Looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tighnari? Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. I keep watch. You leave, you call me. Our recent catch was great. Definitely have enough for a grand feast this time. Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two doing back here? Kale! It's nice to see you again. Are you doing alright? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tighnari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale! Speaking of Tighnari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tighnari? You just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Party's DI. He left? But isn't Tighnari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tighnari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time though. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tighnari originally studied in the Immorta Darshan of the Academia, and Partis DI is something like the Immorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tighnari once spent a long time conducting research at Party's DI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tighnari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Don't worry. I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tighnari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale!
course you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the Traveler to be wary of me right now. After all, the Doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the Doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the Doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Whew. What a relief. The Doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the Doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the Academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the Doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the Traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. I'm hungry. Let's hunt. Please be careful not to touch the plants here. Traveler? It is you! Ah! It's Hypatia! Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. As
That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last! When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was! That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some Spirit-born ale with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about?
You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation! Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... Ah! You... Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I... already lost my mind? Wait, something isn't right. Okay, we finally lost him! Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Sarathana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague.
since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The Doctor and the Balladeer. We have 2 F2P Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat.
That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tighnari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. I smell rabbit. We finally made it to Caravan Rebat. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Over here. Alhaitham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. What the... Where did she go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Eremite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their order. So you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties.
Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? So that's your answer. Well, I do work for the Academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right! We have the same plan as you! But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? It's always better to travel with someone you know. Let's go! Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Alhaitham, do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him.
If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Has Alhaitham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them! Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong! Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away! Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling.
This is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Alhaitham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority.
Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the Traveler. Alhaitham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home.
I had nothing going on, so I decided to return to our village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, dear. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Alright, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Ah! Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the Flame Mane in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Outlines your fate. No! Here comes another wave! When are they ever gonna let up?
creatures stopped appearing. Was that the last of them? What we fought वॉच just now टाइम was देखने के probably the लिए YouTube aftermath of Studio the इंस्टॉल कर ले. sandstorm. So we should be safe for the Wait, time being. random guy I'm loving. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Co-op was not showing. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands क्या full हुआ है? taking care of the village's YouTube elderly and Studio down children. install कर तेरे phone में YouTube Studio. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle On. Sir, I am also अच्छा originally किया from हुआ है the तो उसके अंदर desert, जा ना. but I have not been back for some. YouTube Studio में जा, ऐसा क्लिक कर और फिर बाद में इधर देखिए अर्न के ऊपर ऑप्शन रहेगा, इधर इधर तेरे को दिख जाएगा. ठीक है. अबे ले गया. अब वापस गेम चालू होगा. समझा? सिंपल है रे, इतना देखने का, थोड़ा मेन्यू वेन्यू देखने का. अपडेट कर ले अगर अपडेट नहीं रहेगा तो. अभी पहले का अपडेट अलग था, अभी का अपडेट सब चाहिए. ऐप पे अपडेट कर लेना. गया स्टोरी गया. सॉरी काय का होता है, वो तो भाई होता है. पता नहीं रैम मैनेजमेंट थोड़ा कचरा कर दिया है. हो गया ना, 25 को बहुत कन्वर्सेशन कंटिन्यू होगा. The creatures stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. अरे ये क्या कर रही है? तो बोली कॉलेज में ये भाई को बोलो 3-4 मिनट के बाद बाहर. वो सब नहीं, वो लोग को बोलो खुद से आने का, तो आओ. 3-4 मिनट के लिए नहीं जाते. चाय में मंगा भी लेंगे इधर, अब लेके आ जाएगा. नहीं चाय में बनाने का भाई चम्मच लेके आ रही, जब आप ही खा चलो ये लो. अरे हेलो ना मत. अरे मैं देखा, मेरे को इधर कोने में दिखा. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars, exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest.
The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. I keep watch. You leave, you call me. I smell rabbit. If you're scared of lightning, hide now.
I keep watch. You leave, you call me. I'm hungry. Let's hunt. I smell rabbit. I keep watch. You leave, you call me.
hungry. Let's hunt. I keep watch. You leave, you come. Avoid the trees. Follow me. Hungry. Let's hunt. I smell rabbit.
way behind schedule. Please, step back. Bet you can't. Get him. Hey. I keep watch. I You wasn't leave, waiting for call me. you. I just happened to be resting. I'm hungry. Let's hunt.
I smell rabbit. I'm hungry. Let's hunt. Rain outlines your fate. Rain cutter. Time to act. No, my sword. If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? Now, this is what I call a moment of solitude.
Body and mind. Excellent. Body and mind. Excellent. Empty chest. Good for storage. Smell of treasure. Strange. Empty chest. Good for storage.
these things useful? Empty chest. Good for storage. Chat. Now you shall perish! Witness the power of good! Don't be scared! Illusion shattered! Torn to oblivion! बोला ना कितना बोले तेरे को बोला कर ही दिया वर्ल्ड में क्या वही सारा काम कर रही है Shine down! पत्थर काट रहा है इसी जगह बैठ Let me weave you a first. No, my soul shines eternal! अभी बोलूंगा टेंशन मत ले अभी बोलो क्या फालतू
ये क्या 4-5 कप दिए क्या नींद आ रहा है दवाई खा शाओ के लिए फार्म कर रहा है क्या हाँ शाओ के लिए फार्म कर इसे भी कौन सा ढंग का मटेरियल देते हैं लोग सारा काम वो कर देगा मैं खाली बैठ के देखता हूँ बैठे बैठे नज़ारा देखो चाय पी लो मैं देख रहा कितना ज्यादा है पिन क्या बोल रहा है पिन पिन क्या अच्छा वो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर देने का तेरे को ये लोग से पूछ रहा था तो उसका आंसर देने का है रिडल है उसको सॉल्व करके भाई आंसर दो एचपी दे रहा है भी एचपी 4 स्टार दिया है सब रहेंगे तो एक वीडियो चालू करता हूँ समझ जाएगा कल का रात में स्ट्रीम देखा रहे तो समझ जाएगा Witness the power of the clock. Rain outlines your fate. Know my soul. Let me read you a verse. Get back! गर्मी लग रहा है ऐसी चालू हो रही हाँ प्लेट मिल गया खरीद का आजा ना करने का पूछ के रहा आजा स्ट्रीम बंद मत करना बस आएगा वो चालू रख गवर्नमेंट में वापस इनवाइट भेजना पड़ेगा ना वैसे भी हो गया मेरा भेज नहीं यूज कर लेंगे Witness the power of the clock. Rain outlines your fate. Inazuma shines eternally. Get back! There is no escape. Rain cutter.
देख तो फोन है ऑन कैसे रखूं? ठीक है आजा आजा बहुत मिशन करते कोई फॉग वाला है ये Let me read you a verse. Know my sword. आजा आजा जल्दी आजा कल आएगा क्या तेरा ऑन होना नहीं 10 मिनट कान का बाल ही दिया है फ्लावर दिया क्या बढ़िया बना है थोड़ा और मंगवा लो बोलो ना मुझे कुछ अरे कहाँ यार खांसी की दवा इसी के लिए खा नहीं रहा था खाना चालू किया एकदम नींद आना चालू पियो ना एक और कप चाय है आधा कप तो रहेगा शायद मस्त है चाय There is no escape! Torn to oblivion! Outlines your fate. Ring cutter. मजा अकेले के लिए है तो इसलिए डंडा तो लगा हुआ है ना इसमें डंडा लगा है डंडा नहीं है जो है सो वही है ला के लगा दिया था पटाखे में जब से लगा एक बार मैंने साफ नहीं किया बस भी एक चश्मा है कितने का लिए अच्छा पूरा एकदम पैक कर दिया भेजो भेजो कितने का लिए थे 70-80 रुपए मैं 100 रुपए का लिया 100 रुपए का आता मैं स्क्रीन होता है मैंने बहुत इस्तेमाल किया अच्छा बहुत फर्क पड़ता है फर्क तो पड़ता है ये चश्मा अच्छा है मतलब पेन के आने के बाद पता तो चल रहा है वो 100 रुपए के फोल्ड सिस्टम का काम आता है बाकी पेन के घूमने हो जाता है अरे खरीदे जब से अभी तक घूमा किधर नहीं उसको खरीदे ही कितना लास्ट टाइम गर्मी के टाइम ही गया था ये फ्री के लिए गया था मतलब क्या हो गया तो वो एडिशन बड़ा डब्बा नहीं पड़ा घर पे लेके आओ वो साला भी बड़ा डब्बा नहीं ये लेके आता तो अगले दिन गया A minor setback. 50 रुपया 50 से चश्मा लिया वहीं से ना There is no escape! ये बावला है आपका नाम ही नहीं लिखा आईडी कार्ड पे मास्टर कार्ड भी लिखा क्यों कितना लिखा है कि मास्टर कार्ड लोग नाम नहीं लिखा क्यों ऐसा क्यों पॉलिसी क्या होती है सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी मिलती है
यही वाला है ना? क्या है? राइट देखो बीच वाला। I never embark on a journey without a good book to accompany me. Time to act. क्या नाम है आपका? इसका किलर बॉय मेरा नहीं है, वो तो सामने वाला बच्चा है, वही आके आने के लिए। कौन सी लड़की है आपको? हाँ कौन सी लड़की है आपको? लड़की तो आप लड़ रहे हो ना, ये क्या ये? हाँ वो थोड़ा ढीले है ये। कौन सा कैरेक्टर कौन सा आपको? मेरा ये दो कैरेक्टर। मतलब 4 का स्क्वाड का रहता है, तो इसके अंदर 4 लोग 3 लोग को इनवाइट भी कर सकते हैं। एक कैरेक्टर। मजा पैसे के लिए कर रहा हूँ। हुआ था ना, अच्छा खासा हुआ था। चैनल डेड हो गया है अभी, बंद था ना बीच में, छोड़ दिया था ना मैं। कोई सपोर्ट अभी नहीं एक बार भी जितने भी अभी नहीं करेगा ना, अभी चैनल में नहीं है व्यूज। एक बार ही मतलब करियर में आप एक बार कितने नहीं, ऐसा तो नहीं अलग बात है, करने वाले बहुत करते हैं। करना बहुत ये है ना, Illusion shattered. Torn to oblivion. वो सब अगर डालना चालू करेंगे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ये डिजिटली हम लोग कुछ कर सकते हैं, बहुत करेंगे भी तो कॉस्टली पड़ जाता है। अरे बहुत मेटा का तो क्या ही बताऊं। क्वांटम कंप्यूटिंग में चालू भी है ना, तो ये किए एक्सपेरिमेंट किए, 12% वीडियो देखा ये लोग ने। थियरी है ना, पेपर को फोल्ड करेंगे तो स्पेस टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, पेपर वाला। तो क्वांटम मैकेनिक्स भी है ना, वही समझ लो। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ही क्वांटम कंप्यूटिंग बना है। हाँ वो अलग चीज है, वर्महोल जैसा पेपर फोल्ड करते ये यहाँ से वहाँ आप भेज सकते हो, टाइम स्पेस को आप। अच्छा वैसा बोल रहे हो, टेलीपोर्टेशन। हाँ टेलीपोर्टेशन, हाँ उसी बात नहीं वो अलग। ये लोग जबरदस्ती का क्लियर किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब पिक्चर में दिखाता ना कि मैं यहाँ से वैसे इन्फॉर्मेशन। तो ये लोग ने बोला कि एक चीज ये लोग ने किया है, लेकिन अब क्या है क्या नहीं। अरे सेशन दिया ने पढ़ा इसका क्या गूगल का जो सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर बीट किया IBM के, गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग बनाया है। हाँ वही एम करता है, वो एक प्रॉब्लम है 10 सेकंड में सॉल्व करता है, जो नॉर्मली IBM का सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में सॉल्व करेगा। तो IBM ने बोला नहीं 2.5 दिन लगेगा, 10,000 साल में लगेगा। अच्छा
क्या प्रॉब्लम रहता है जो इतनी जल्दी सॉल्व करता है, मतलब कैसा प्रॉब्लम टाइप देते हो? अभी क्वांटम कंपनी मतलब बहुत इनिशियल स्टेज पे, मतलब मोस्टली IBM और गूगल ही सुप्रीमेसी ट्राई करे। चाइना में थोड़ा बहुत भी ब्रिज पे रहता है ना, मतलब ये सब क्लासिकल कंप्यूटर है, ठीक है। जब क्लासिकल कंप्यूटर नॉर्मली क्लासिकल फिजिक्स पे बना हुआ है, तो क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स पे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स लेवल पे बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन लेवल पे मतलब आप जाओगे ना, अभी इलेक्ट्रॉन तो पड़े हो गए आपने, तो इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर है, कहीं वेव है कहीं पार्टिकल है। हाँ वो तो है, उसमें भी ये तो लाइट तो पता है, लाइट डुअल है, इलेक्ट्रॉन भी डुअल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी डुअल है, वेव है। क्वांटम्स के हर पार्टिकल मतलब जितने भी एटम्स में पार्टिकल्स हैं सब डुअल नेचर है। कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो पार्टिकल बन जाते हैं, कोई ऑब्जर्व नहीं करता वेव बन जाता है। तो बहुत बड़ा लड़ाई है, पड़ा था। हाँ ये लोग साइंटिस्ट लोग का लड़ाई अपना अपना लोग है ना, तो लोग क्यूबिट यूज करते हैं, बिट यूज नहीं करते, वन जॉब यूज करते हैं, क्यूबिट यूज करते हैं। तो अलग तरीके से उसका सिस्टम है, अलग तरीके से मैकेनिक्स है। ये सब इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आता है। बहुत इनिशियल लेवल पे, इंडिया तो कोई लेवल पे ही नहीं। इंडिया तो छोड़ 50 साल 60 साल के बाद वही मिलेगा भी, तो मतलब बेसिक कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं करेगा। वो मतलब वाइड भी कोई क्लाउड सर्विस बना दिया, उसका वो दे दिया, तो उसको टेंशन बहुत कम -20 इतना हार्ड कैलकुलेशन है। -20 डिग्री टेम्परेचर अभी जो सुपर कंप्यूटर गूगल ने बनाया, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कोई रियल लाइफ सिनेरियो सॉल्व नहीं करता। उन्होंने फैक्टराइजेशन किया था, फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर, मतलब अभी काम ही बाकी बहुत 50 साल, मतलब कोई बोलता बना पाओगे, कोई बोलता नहीं बना पाओगे। सब आइंस्टाइन बोला था फालतू है, आइंस्टाइन तो बहुत अपोज था क्वांटम मैकेनिक्स के। इसमें अभी क्वांटम में नहीं है, वो मार्बल का चल रहा है। बोल रहा हूँ क्वांटम इंटेंगलमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब बोलते हैं कि दो क्वांटम कनेक्ट इस तरह कनेक्टेड है, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दो ना, इंस्टेंटली दूसरे के पास भेज देंगे। अगर चाहे वो दूसरा वाला क्वांटम चार्ज पे भी ना हो, मैं इधर भी ना हो, इसके बाद क्वांटिटी मैं इधर हूँ, इसको थोड़ा टिप किया, फटाक से इन्फॉर्मेशन वहाँ भेज दिया इंस्टेंट। मतलब सूरज की रोशनी को, लाइट को सन से यहाँ आने के लिए 8 मिनट लगता है, वो इंस्टेंट भेजेगा। तो एज पर यूनिवर्स, एज पर फिजिक्स, लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। लेकिन लोग कुछ क्लेम करते नहीं, ये क्वांटम इंफॉर्मेशन लाइट से भी फास्ट। जो वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस। वही सब देख रहा था मैं 2-3 दिन पहले। फिजिक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन कुछ भी बोलो सबका अपना फायदा है। फिजिक्स की बात अलग है, बायोलॉजी का अपना अलग है। हाँ बायोलॉजी में ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का भी अच्छा ही है, एनाटॉमी वाटॉमी पढ़ने। बायोलॉजी मतलब आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे सराउंडिंग में, फिजिक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। फिजिक्स में खाली लड़ाई कर पाओगे। मतलब एक ही होता बच्चे लोगों को, देखो बायोलॉजी पढ़ोगे तो जो ओनली स्टडी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें जान है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के हिसाब से लकड़ी या लड़की में कोई फर्क नहीं है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगी। अच्छा हाँ we treat equal। ऐसे बोले तो ना कि बायोलॉजी वाले लोग हैं क्या। I have taught you everything I know। एक तो फोन में ये आगे पीछे कैसे, तो ऊपर नीचे होता है कैसे, कहीं से भी मोड़ सकते हैं। वही अमेज़न से मंगाया था, देखने को नहीं 150-200 हमको महंगा था, 200-300 रुपए तक का था शायद। अच्छा है, चीज अच्छा बना है। Inazuma shines eternal। सही बना है ना, सस्ते में काम होता है। ऊपर भी आता है नहीं हाइट जो है उसी को घुमाओ, वो रोटेशन बेस बनाया है। मतलब मैक्सिमम हाइट यही रहेगी, हाइट वही रहेगी, बाकी उसको किसी में लटकाने का, किसी में फटकाने का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो वीडियोग्राफी नहीं कर सकते ना इसको, ये मोस्टली कैमरा होल्ड करने के लिए, कैमरा फोन होल्ड करने के लिए। तो मैं वीडियो निकालना तो हाँ, तो उसके अंदर फोन डाल के अच्छा
अच्छा ऐसा सही है तो स्टैंड से तो नहीं है हाँ ये अच्छा मोस्टली पब्लिक यही यूज करते हैं ये तो सर डिस्प्ले का फंक्शन था वीडियो स्टैंड पे वो स्टैंड देखो क्या मतलब हल्का स्टैंड था हाँ हल्का 500 रुपए में वो स्टैंड मिलता है मजा नहीं आया लेकिन उसको मजा वो एकदम खेल रहा था वो हल्का फूक मारेगा गिर जाएगा लेकिन वो जमीन से नीचे तक था ना वो स्टैंड इतना ऊंचा था कोई हाइट पे डाल देंगे कुर्सी से रख दो तो टेंशन नहीं ना हो जाएगा कितना मस्त सेटअप करा था हिल नहीं रहा यार बराबर बराबर लगाना पड़ा नहीं ये ठीक है नॉर्मली आप इसके अंदर फंसा सकते हो ये सब में कहीं भी फंसा सकते हो वही घुमा के नीचे का टेढ़ा मेढ़ा हाँ लेकिन हाँ वैसा मतलब रख दिया हो गया पब्लिक मतलब मोटे कड़क चीज में लटका देती है ये भी साथ में है क्या साथ में है हाँ साथ में सब उसके अंदर सारा साथ छोटा बड़ा करने का है क्या नहीं हाँ उसको ऊपर कर बस वो एक मेन साइज है ये स्टैंडर्ड साइज हाँ ये स्टैंडर्ड साइज है उसके बाद वो कर सकते हैं चाहते रख लिया I smell rabbit. I smell rabbit. Rabbits. निकल रहा दस्ट है हाँ आपका भाई बता दो पर्सनल बात करें आपका भाई शिकायत कर रहा था रिस्पॉन्स नहीं दिया तो भी चालू है कौन है ऐसे तो मेरा भाई चुगली कर ही नहीं सकता क्या शिकायत किया वैसे मैंने हाँ? अच्छा चुगली नहीं कर सकता ऐसे बोल रहे भाई भी चुगली नहीं कर सकते सीधा बुराई कर सकते हैं
I keep watch. You leave, you call me. These things useful? These things... I see everything.
बंद हो गया गेम, डिस्कॉर्ड पे जाने के लिए बंद हो गया। तुम लोग हो क्या? तुम लोग मैप तुम लोग हो क्या अभी मेरे वर्ल्ड में, या निकल गए? सब मतलब 1 मिनट के अंदर चालू हो गया। मैं देख रहा हूँ क्या खड़ा खड़ा। हाँ, तो इसका मतलब तेरा मोबाइल नहीं होता 2 मिनट, 5 मिनट लगता है। नहीं नहीं, अब भी हो रहा है, आज पता नहीं क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा। ऐसा नहीं होता कभी, पहली बार हुआ है, मतलब आज 2 बार हो गया। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज 2 बार हो गया। Time to act. क्या बंदे लोग को मारे नहीं गए, ऊपर नहीं गए? Body and mind. बहुत मटेरियल मिल रहा है तुम लोग को सबको। तो ट्रांसफॉर्मर से बड़ा मटेरियल बना लेना, ट्रांसफॉर्मर से। यार मेरे को भी फाइट से हाँ बोल ना। अरे जाना किधर है? गो डीपर इनटू दिस रूमी आइलैंड। Body and mind. एक घंटा लेके जाओ कैसे? किधर जाओ? डीपर किधर जाओ? Time to act. वो डीपर इनटू दिस रूमी आइलैंड दिखा रहा है। आ गया आ गया आ गया। अच्छा तुम लोग आ नहीं सकते? आजा आजा, बंदा आया, थंडरबर्ड को मारने का है किधर लेकिन ये थंडरबर्ड? Body. Time to. वही तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। हायर 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 बोलते। कहाँ मार? किधर है? क्या पता कहाँ? अरे पेड़ पे मार रहा था ये। खत्म हो गया, मार दिया। Let me weave you a verse. No, my sword. Time to act. वो तेरे अपने से पहले जाके करवर देगा, पता भी नहीं चलेगा।
अरे पेड़ को मारने का है बे, ये पेड़ को मारने मेरे को भी ऐसे कुछ याद नहीं रहता। साला पहले ये पेड़ को बनाया था, अभी डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी 3 एरिया और बचा हुआ। हाँ पहले ये लोग को फेदर लाके जमा करना पड़ता, फिर अभी फेदर लाके डिस्ट्रॉय करना। मेरे को भी नहीं पता, तू स्क्रिप्ट करने बोल रहा, मैं स्क्रिप्ट कर रहा। Destroy the 3 purchase. ये नहीं, वो तीनों फॉग एरिया पे जाने हैं। Time to act. पत्थर वाला? हाँ जो परसों किया था वही करने का वापस। परसों जो रात को किया था वही वापस करना। I hope we find long lost ancient कहाँ अभी तो literature. कंप्लीट किधर किया? ये आ गया अंदर, जाने से आ गया था जाने। छुआ ही नहीं। Rain outlines your नकली बच्ची बना रहे थे। कहाँ हो जाने वाली? पता नहीं अभी मैं ठीक से सुना नहीं। ये लोग चैट तीनों साले इतना कर रहे थे घंटा, मेरे को लास्ट तक तूने जो देखा वहीं तक है, उसके बाद कुछ किया नहीं अभी तक। फिर ये आ गया ना उसके बाद। हाँ उस टाइम गया ना, उसके बाद से कुछ हुआ नहीं, सेम थिंग, कुछ नया कुछ हुआ नहीं। वो मतलब वो दहिया के साथ, वो लोग के साथ अलाइथा मेरे के साथ बहुत अच्छा हुआ ना, उसके आगे कुछ हुआ नहीं। हाँ तो उसी टाइम वही है बस, और कुछ हुआ नहीं। ये पहले तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया मेरे पास। मारो अभी इसको, ये जो चमक रहा है ना उसको खत्म करो। Use elemental set to find the perch. Rain outlines your fate. आ रहा हूँ। अरे प्रेशियस चेस्ट था ना इसके लिए। Treasure hunting, a valiant endeavor. No, my sword! Huh? Let me weave you a verse. कर दिया ना ऐसा लग रहा अंधेरे में मार रहा हूँ, खाली अंधेरे में कहीं भी मार रहा हूँ। Smell of treasure. Strange. सब्सक्राइब के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है। अरे मारना इसको, ये सब फोड़ना, ये जो इलेक्ट्रिक गोल गोल है ना बल्ब, इसको फोड़ना। Rain outlines your fate. साले तू किया इतना हल्का सा तो याद रहना चाहिए बे। किया क्या किया था ऐसा कुछ?
मार 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 मार. I see everything. ये reaction नहीं. हो गया ना, आ रहा हो भी, जा रहा हो तो मार भी दिया उसने. अच्छा बंदे नहीं आ रहे लेकिन साइन हो गया. आओ नीचे कहीं गिरा रहेगा, ये कभी फॉग जाएगा तो दिखेगा. Race you! अंडरग्राउंड नहीं जाना वैसे. हाँ दूसरा वाला करना है. आजा टेलीपोर्ट पे आजा. है ना मैं जीत रहा है. तो बहुत दूर है ना, लोग जाएंगे हम तो चलो. तो तुम लोग भटक जाओगे. तुम लोग भटक जाओगे. क्या बोल रहा है? उधर से बैठ के वो साला तीर मार रहा है दूर से, पता? Race you! वो ना Nice and spicy! मार रहा माता कुछ लोग. Out of the frying pan, into the fire! भाई इसको आके मार. Boba, get them! That really hurt! देख के लूट रहे हैं. बस इसको छोड़ो. Fuck that. इमेज मर गए क्या फॉग जाने के बाद? कैमरे में कैप्चर कर लिया तो उसके बाद अपने आप ये हो जाते क्या, जॉइन वन हो जाते. और मार 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 इसको मार.
अप्लाई कर Into the fire! No! Did I ruin everything? Empty chest. Good for storage. बहुत दिन ना मौसम ठंडा कर जाने से Next. 70 किया टैलेंट थोड़ा सा किया हाँ मारो इसको चेस्ट चाहिए Empty chest. Good for storage. Disappear! Worthless! Here! इधर भाई बंदे लोग तो भाई मिलता बंदा वाला मत बोलो There's quality here. Get back! These things useful? तीर मारना भी चालू कर दी गई और मैं पहुंच भी गया अंदर वो अंदर नहीं आया क्या मैं अंदर आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे अब गोले फोड़ गोले गोले ढूंढ गोले फोड़ तो अंदर आ जाए उसका गोला देखना नीचे 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 मेटल सेट नीचे नीचे Lament! Worthless! Worthless! मार ये छोड़ मत मैं देख वो जो लाइट है लाइट को फॉलो कर
ओ शाओ शाओ देखना, शाओ का प्लंज भेज पूरा पूरा ये डैमेज दे दिया पूरा। इनो फॉक क्लियर। चलो ये भी हो गया। हवा में उड़ती रहती है, हवा में भी उड़ती है क्या ये? जल्द भाग के आते हैं, जल्द से लगने लगा। तेरा एक्सप्लोरेशन, तेरा अचीवमेंट्स These things तेरा अचीवमेंट्स कितने useful? हैं? 600 है। कुछ तो बिजली कड़क रहा है भाई, आ रहा एनिमेशन आ रहा है। अच्छा लाल हो गया, तो बोला ना लाल हो जाता है एरिया, लाल हो गया। Was close. We barely managed to get out to see this time out of the corner. तुम लोग सब हट गए क्या उधर से? लाल लाल फॉग तो दिख नहीं रहा इधर मेरे को। आजू बाजू या जो बिजार एडवेंचर। टोरेंट से डाउन गया। स्ट्रीम हो पाएगा क्या आज रात 8 बजे? +90 सुमेरु करते करते गांड फटेगी सब। तुम अरे सुमेरु ऊपर नीचे बहुत है ना बे, घंटा इधर उधर सब पब्लिक पागल हो जाएगी। अभी मैं उसमें हूँ, क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन में। तुम लोग ही आते जाते हो यार, कोई नया बंदा आ नहीं रहा है। हाँ बोल। अरे किधर? क्यों? हाँ दिख रही है। हाँ। अरे ये तो पता है भी, कितने बार बताया। बड़ा बेशरम है, पता है मेरे को।
तेरे से पहले इसने बताया था। अरे भाई नए व्यूवर्स लेके आओ यार तुम लोग, कम से कम 60-70 व्यूवर्स लेके आओ। तो क्या बात, उसके बाद मोनेटाइजेशन के बाद पैसा ही पैसा तू बोल रहा था। सब्सक्राइबर नहीं, अरे भाई पब्लिक चाहिए, पब्लिक आनी चाहिए, पब्लिक भी चाहिए, व्यूज चाहिए। नहीं, एक साल में 1000 सब्सक्राइबर तो है रे मेरे पास। सब्सक्राइबर है, मेरे को वॉच टाइम बढ़ा, इसके अंदर तो 10 लाख व्यूज चाहिए। सब्सक्राइबर भी चाहिए भाई, 1000 सब्सक्राइबर 10 लाख व्यूज। चाहिए 1000 सब्सक्राइबर कंपल्सरी, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम, नहीं तो 10 लाख व्यूज बस। वही बातचीत कर, ये दूसरे दिन आने बोलेंगे ना ये लोग। बोल वचन, बहुत बोल वचन करते हैं, मेरे को तो नींद आ रहा है, दवाई खा लिया ना। स्टोरी में तो तुम लोग आ ही नहीं सकते। स्टोरी में एनिमीज इजी देता है, पता है, टफ नहीं देते लोग, इजी देते हैं। मालूम है ना, पब्लिक की चुप है। हो गया टाटा टेल्स। Hey! इधर भी आके बात कर रहे हैं। मुझे लगा तू बोल रहा कि उठा मत, मुझे लगा कुछ मिलेगा बाद में, उठाना नहीं पड़ेगा, क्वेस्ट वेस्ट रहेगा, तो मुझे लगा कैमरा साला यूज कर। आजा 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 इधर। क्या बोल रहा है? हाँ वो तो पढ़ सकती, हो तो पता है। अच्छा ट्रैवलर क्या बोल रहा है, वो भी पढ़ सकती है। Let me try my blade. Nice and spicy. No time to lose. रिएक्शन मिलेगा। Boba, get them. करके रहो। You win. इसका भी शायद कुछ अचीवमेंट कर रहा है। अबे ये बाहर जाके आइलैंड के कुछ कर रहा है, एक मैप में देख सर। Cut down like this. हाँ ये तो ये जो पड़ा है।
से आना पड़ता है साला वो बेकार लगता है। हाँ आजा इधर इधर आ ही रहता है कैमरा मेरे को कुछ करने का कैमरा There is no escape. स्पेशल कैमरा से क्या होता है बे पता है? मेरे पास एक स्पेशल कैमरा है। Take the picture of the situation at the क्या इफेक्ट आता है स्पेशल कैमरा में? खाने के बाद आ रहा हूँ फोटो लेके आ रहा हूँ फोटो लेके अरे यार फोटो घंटा लेने वाले आके मार भाई Insolent shall be punished. इसके लिए वो की करे भाई मैं भाग रहा हूँ मेरे को फोटो मिल गया बाद में जब एरिया क्लियर होगा तो फिर आराम से पेलेंगे इसी के लिए मैं नहीं मारता क्लियर होगा तो कुछ करेंगे अबे रोज ये लोग बुला रहे पता है दोनों कुछ ऐसे ही चल रहे हैं ये लोग थोड़ा थोड़ा करके फिर कल आओ कल आओ कल आओ कल आओ कल करते एक साथ कुछ नहीं करते कभी ये करने का ये रखने का वो करने का फिर बोलते कल आ जाए ये 2 मिनट कोऑप मोड से निकल रहा हूँ इसको कैमरा का फोटो देंगे ठीक है सारी भाई पता नहीं दवाई नहीं खांसी की दवाई इसके लिए नहीं खाता था ना नींद आता है बहुत नींद आता है कर ले ज्वाइन I'm hungry. Let's hunt. Stay put!
भाई बहुत सारे सामान मिल गए। चलो आजा सुमेरु आजा। वर्ल्ड क्वेस्ट कर। क्या हील कर रहा? अच्छा हील कितना करता है? कैसा बोनी फाइल बोनी में भर को भर ताली की आवाज आ रही थी क्या? तुम लोग को ये सब आता है क्या? गोल्डन स्पीड से कोई स्टार्ट कर फॉलो द फुटप्रिंट्स। ये देख अलाइथम इधर खड़ा है। ये देख अलाइथम इधर खड़ा है। देख ये देख बकचोद लड़का किधर है? तेरे को नहीं दिख रहा? अबे अलाइथम नहीं दिख रहा तेरे को? स्क्रीनशॉट। हाँ इधर 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 मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे से जस्ट सामने। मैं उसको फेस करके खड़ा हूँ। साइड में साथ में अपन फोटो खींचते रहे। खड़े रहे वैसे खड़े रहे ना। नहीं थोड़ा और हाँ थोड़ा आगे। हाँ थोड़ा चलने वाला वॉक कर ले। हाँ खड़े रख। अरे हाँ थोड़ा ऐसे ऐसे खड़े रख। एक काम कर मेरे साइड आ जा। मैं जहाँ खड़ा मेरे साइड आ जाते तेरे को देखेगा। इधर नहीं मेरे इधर आ जा। इधर आ जा। इधर आ जा। इधर मेरे मैं जहाँ खड़ा हूँ और उस तरफ ही देख। और थोड़ा आगे मेरी तरफ देख। और तेरे राइट में देख। हल्का सा थोड़ा हल्का सा आ गया। और थोड़ा लेफ्ट साइड देख। नहीं पीछे वो पीछे देख तेरे पीछे देख। थोड़ा और नजदीक जा। और थोड़ा आ गया ना थोड़ा। हाँ अरे यार आगे। अरे मैं जैसे खड़ा हूँ इसी उतने ही डिस्टेंस पे खड़े रहे ना। मेरा देख मेरा डिस्टेंस जो है ना उसी डिस्टेंस पे खड़े रहे। अरे यार मस्त सीन आता रे। Why do so many people make such a big deal हाँ ठीक है मैं खड़ा हुआ अभी। seeking चला the adepti? उधर ही खड़े रह के There's अपोजिट adepti साइड में खड़े। everywhere, isn't there? तेरे को देखेगा वो रेडन को देखेगा। अरे पकचोद उधर नहीं मेरे हाँ मेरे अपोजिट साइड में खड़े थे। थोड़ा और जा आगे जा। चिपक मेरे और तेरे बीच में एक आदमी खड़ा रहना चाहिए ऐसा। मेरा जो राइट मेरा जो लेफ्ट साइड है इधर खड़े रहने का। तेरे को इधर हट इधर खड़े रहने का। इधर ये देख अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना यहाँ खड़े रह के ऐसा देखने का। ऐसा ठीक है जा। हाँ बस थोड़ा और पीछे।
हाँ बस 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 Yelan. Smile. Go as one. ठीक है Empty chest. Good for इसे storage. फेंक देती है अधिक लक्षण दिखा रहा है या पीछे पीछे थोड़ा ब्राइटनेस इतना कम दिखा रहा है थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने का साला बहुत है ज़्यादा ही अंधेरा था Frostbite. Illusion shattered. Cool it. जीन ले लिया मार रहा है क्या तू Shine down. Freedom. Torn to oblivion. Oh, so sorry. We're way behind. These things useful? मार बे जो रास्ते में मिल रहा है सब मार के जो मुझे मार के चलना वो देखो भाग गया बड़ा बोल Now you shall perish. These things useful? म्यूजिक अच्छा ही है इंडियन टाइप वही तो कर रहा हूँ
चलो भाई खाली खोलने का था खोल। आ रही है दिन मेरा दिल लुटिया हो चल बोलो मान लुटिया हो। Shine down. क्या बोल रहा है? कैरेक्टर खुला क्या ऑफिस? अच्छा ऐसा भी होता है क्या? अच्छा पूरा अच्छा ऐसा है क्या? उसके अंदर पूरा सोना ही पड़ता है। अच्छा हाँ विचर में भी है विचर में भी सेम है विचर गेम में भी सेम। विचर में ऐसा बैठता है मेडिटेट करता है। करना क्या रहता है माइनक्राफ्ट में करना क्या रहता है वैसे मतलब मेन काम क्या है? मतलब बकचोदी करने का बस। इतना फेमस हो गया इसी फोन में खेला रहेगा ना। अच्छा रेंडर नहीं हो रहा था फोन में चलता है अच्छा चलता है। मिलियन लगते होंगे। तो आप पब्लिक एक्सपी करते करते पगला जाएगी। अबे आप पहले एक्सपी नहीं मिलता था अभी एक्सपी बहुत मिलता है। ये लोग कर देंगे ये लोग एक्सपी देना। अरे मैं जब खेल रहा था तो एक्सपी नहीं मिलता था मजाक नहीं कर रहा। देखना कितना जल्दी जल्दी एक्सपी दिया मेरे को। बच्चा गया कि हाँ बिना जुम्मा मेरा बहुत बाकी है क्या अभी? वही ना खाली फॉग हटाने वाला ही बाकी है ना।
बच्चों आदमी कर क्या रहा है? रेट आने का कैसे? Freeze! वही तेरे को दिखाने के लिए बुलाया रहे। किधर है तू? अच्छा मेरे जगह ओपन ही नहीं है ना और वो चले गया वही दिखा रहा है। ये भाई मार इसको। ये अबे किधर चले गया? मेरे पास सायु लेवल 1 का है। एक हवा देके मर जाएगा वो। हाँ ये अरे मेरे पता ही नहीं मेंशन लगी। शार्ट चेंज करने के बाद वेट भी हटाना पड़ेगा। There's quality here. Sacred seal sheet right. आजा चूली को फॉलो कर रहा है। There's quality here. अंदर टेलीपोर्ट रहेगा ना? Shine down. Useless. Now you shall perish. There is no escape. Smell of treasure. Strange. सिगरेट नहीं हो रहा है। You don't have enough clearance लिखा हुआ है।
बंदे आएंगे कैसे मारूंगा? झाटू लोग तुम लोग सब उधर है। ये भाई इधर आ जा भाई। एक आंडू दिमाग खराब कर रहा है। अंदर जाके बैठ गया बोलता है बोलता है आजा। Wow, these will come in handy. खाली बता रहे कि मैं अंदर घुस सकता हूँ। बहुत ज्यादा ही फेल है। लास्ट टाइम हम लोग खुद अंदर घुसाने में चला गया। तो बोलना पड़ेगा हम लोग का लो लेवल डिवाइस है भाई, गरीब लोग हैं हम लोग। जमीन के अंदर क्या वो नहीं है क्या? क्या कर लिया है ना, ये पता जाएगा। There's quality here. मैं बात करता तो तेरे को टेलीपोर्टर अपना खुद का लगा सकते हैं क्या? अच्छा कैसे लगाते हैं वैसे? मेरे को कब मिलेगा? जो भी है क्राफ्टिंग का जो भी मिलेगा। जो भी वही रेसिपी बोलते ना, घंटा खाने को रेसिपी, इसको भी बनाने को। इसी से मिला रहेगा। मैं तो रेपुटेशन के करता ही नहीं। कभी तुम लोग रहते, हाँ तो हफ्ते साथ आते रहे। टेलीपोर्टर आ रहा ऑन कर दो। बात है बात है। चलो अच्छा है। तो लिखा हूँ
छोड़ ना, इग्नोर मार। हाँ अंडरग्राउंड। भाई पजल वजल आ गया। ये जगह है, ऐसे घंटा को समझ में आएगा। ये लोग अंदर ही अंदर कितना नीचे कितना ऊपर डाले हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कंफ्यूज। कितना टाइम हुआ सुमेरु को आए वैसे? अच्छा अभी रिसेंटली आया है। टेलीपोर्टर साला ऊपर है दोस्त है। आजा आजा नीचे आजा, जैसे जैसे आया था ना वैसे से आजा। अंदर अंदर वाला टेलीपोर्टर पकड़ के आजा ना। तो अंदर में टेलीपोर्टर डाला है ना मैंने, तो पकड़ के आजा। जो पानी वाला दिख रहा है, पानी इसके बाजू में एक टेलीपोर्टर है, पकड़ के देखना। कोई भी टेलीपोर्टर पकड़ दे घुसेगा अंदर, सीधा सीधा आने का, कुछ ऊपर नीचे नहीं। हाँ जो जो आया था मारने के बाद एक टेलीपोर्टर अंदर ही मार वो ऑन किया था ना, उसी पे। हाँ अंदर जाओगे। साले तो आंख पे पट्टी लगा के साले चल रहे सबके। हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक ही बार बार नींद आ रहा, पढ़ने बैठेगा तो बस सो जाएगा, इतना ज्यादा बच्चे थे। आर्कॉन क्वेस्ट इधर से रिलेटेड है क्या? इधर आना पड़ता है क्या आर्कॉन क्वेस्ट करने के लिए? अच्छा इधर सैंड एरिया में नहीं आना पड़ता। To activate Scarlet Sand Slate possesses special clearance that will allow you to cut from. बोलना। अच्छा। Activate Scarlet and Slate. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Dashrath left behind. अच्छा Dashrath वाला एरिया है। As you adventure further in, the Scarlet Sand Slate will progressively display key location throughout the ruins. Follow the slate item and use special clearance to unlock these devices, and you may yet reach places that none before you ever have. So, now, मिला भी।
ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो हरा हरा सा है। सैंड वैंड एरिया कभी देखा नहीं है ना, हरी भरी तो रहती है। ऊपर जाने आ, जल्दी आ, ऊपर जाने का जल्दी आ। देखो यार, अबे सीधा सीधा रास्ता है, रुक मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तेरे पास। जो टेलीपोर्टर पे आ जा मेरे, मैं जाऊँ टेलीपोर्टर पे। तू टेलीपोर्टर पे आ। नहीं मत मत इधर मत, ये गलत जगह। कौन वाला टेलीपोर्टर तो ध्यान है। जमीन के अंदर वाला टेलीपोर्टर है किधर पे? ढूंढ लेने दे, रुक जा। हाँ ये वाले टेलीपोर्टर पे है, ये वाले टेलीपोर्टर पे आ जा। ये वाला टेलीपोर्टर आया। चल अब आजा फोन। अरे तू आना भाई, सब क्लियरेंस मिल गया। नहीं इधर से अभी आ जा तू, यही से रास्ता है जाने का अंदर जहाँ मैं था। यहाँ से आया नहीं था, यहाँ से क्या? ठीक है तू आना अभी मेरे साथ। आऊंगा तभी आऊंगा। ये सब टेंडर प्लस है किधर, ऐसे दिखता ही नहीं। इधर इधर गोल्डन स्लम्बर क्वेस्ट करिया प्रोनय। हाँ वही है, गोल्डन स्लम्बर क्वेस्ट है। सब कर दिया भाई, अंदर चल अंदर। यही करके दे रहा था। फिर बताऊं। इधर है। जब हम मुद के आए, 1 सेकंड रुको, बहुत जोर की लगता है। I see everything. Those memories, so dark. Hey,
The damned will sooner die again than lay a hand on me. ये जगह पे हिल मत, नहीं तो नहीं आता है। Illusion shattered. खाना बना के नहीं रखेगा। खाना बना के नहीं रखेगा। ये सब जगह ना कुछ छोड़ना नहीं रहता है, ये सब जगह सब कुछ लेते लेते चलते हैं। ये सीख ले कि भाई एक्सप्लोर कर रहा है ना कोई चीज, उधर ना जो जहाँ जो मिले चुपचाप उठा लेने का, छोड़ने का नहीं। तो बाद में अंदर ढूंढते ढूंढते ना आदमी पगला जाता है। If it's useful, I'll take it. इसके पीछे से जाने का सबसे बात। There is no escape. दीवार में डालता है कि रास्ते में डाला कि भाई जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं करते। What is your favorite DPS? ये क्या है भाई? ये क्या है? कौन सा DPS है भाई मेरा फेवरेट? मेरे को भी बता दे। क्या बता ना, क्या बताओ इसको? टॉकी स्टाइल शाव घंटा मेरे पास शाव है, अभी अभी तो चालू किया है। शाव 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 फॉर नाउ शाव, बिकॉज इधर करना क्या है, ये डॉग शॉट मार देंगे क्या इसको? बहुत स्लो। इधर फिर चलो, किधर जाना है? मैं जब तो कुछ देख रहा हूँ भाई, क्या है? These things useful? अबे इधर प्रेशियस से कोने में पड़ा हुआ है। रिमार्केबल Smell of treasure. Strange. Useless. मिला क्या कुछ इधर? Boring. क्या शुरू करूँ?
पीछे कुछ तो है रे, पीछे खाली क्या है? तू मार, मैं इधर देख के आता हूँ। पीछे डॉगी स्टाइल में कुछ पड़ा है। क्या है वैसे? हेलो भाई, एपेक्स एपेक्स पोस्ट फर्स्ट देखा मैंने, वहां से ही न्यूज़ मिला। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ होगा सीन। मेरा पोस्ट पहले आपने दे। हाँ हाँ, मोबाइल मोबाइल वाला, मोबाइल वाला। हाँ, क्या पता क्या मजबूरी है, क्या करे। अभी थोड़ा आया, मेरे को भी न्यूज़ मिला, मैंने भी डाल दिया न्यूज़। क्या करे, कम्युनिटी पोस्ट तो आज तक मेरा 2 ही डाला है अभी तक। हाँ, मैं तो नेक्स्ट अपडेट में खेलने वाला था, अब घंटा खेल गया। गेंशिन में क्रिएटर को सपोर्ट नहीं दिखता। गेंशिन वाला मेरे को विशेष दे, मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा है? यार यार, मार पहले, पीली लेके जाएगा ना। लेफ्ट में क्या, अगर राइट जाता है ना तो मैं लेफ्ट से पहले जाके चेक करके आता हूँ कि है क्या हुआ। जालिम की फटी होगी, जालिम की बहुत फटी होगी भाई। वो तो वो बोला होगा साला। मतलब इसका प्लंज के अलावा और कुछ नहीं है क्या? ये कौन सा, आप लोग दूसरे एरिया में आ गए क्या? तो वो दूसरे साइड क्या था, वो देख के आया क्या? दूसरे साइड क्या था? There's quality here. तो ये बता कि इसका डेंड्रो की तरह ऊपर है। मेरे को सीढ़ी लगा के देना ऊपर चढ़ने के लिए। एक ना भोसड़ी अल्लाह कहाँ कहाँ डाल दी। पीसी पे खेलने में बहुत मजा आएगा लेकिन अरे मेरे में जगह नहीं है ना। अब जाना किधर है? अब मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। टिकट कुछ आया नहीं। अच्छा है, इधर है तू। इधर क्या बोल रहा है? जालिम ने पोस्ट किया है कि फारलाइट करेगा एंड कुछ लीक भी आया है कि एपेक्स बंद नहीं होगा। कुछ भी चलो, जो भी है, सब बोलने वाले बहुत बोलते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। क्या बोल रहा है तेरे को?
ये बहुत रेयर भी है भाई, बहुत रेयर है वैसे। हाँ बात तो सही है, बहुत रेयर है। होगा कुछ ये का कुछ प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी कंपनी है भाई, लेकिन अब मेरे को नहीं पता चल क्या रहा मार्केट। आजा फॉलो कर, फॉलो तो वहीं रह जाएगा। मार के फिर वापस आना। आजा मार। मेरे का आंख बंद है। इतना लंबा था ये गेम, डेवलपमेंट में सालों लगे रहे, रिलीज होने बीटा सब हुआ, रिलीज ग्लोबल 44 मिलियन मिला फॉर एपेक्स मोबाइल इन 1 ईयर। बहुत लगता है बट एक्चुअली कोडम में 30 मिलियन पर मंथ। क्या 44 मिलियन मिला फॉर एपेक्स इन 1 ईयर? बहुत लगता है बट एक्चुअली कोडम मेक्स 30 मिलियन पर मंथ। हाँ तो इतना कम है ना, 44 मिलियन इन लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा होगा भाई। मतलब गेम डेवलपमेंट इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, बंद ही करना पड़ा भाई। प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या करेंगे। हाँ ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस को पता नहीं। सीओडी का तो पहले से है ना बे। वो गेम पब्लिक को टफ लगा होगा, वही हमें बहुत लगता है। कंपेयर करो तो पता चलता है सच्चाई। अरे उसके अंदर डेवलपमेंट में पैसा बहुत लगता है वैसे। गेम्स वेम्स में ना, मतलब सर्वर वर्वर हैंडल करना ना बच्चों का खेल तो है नहीं, आपको भी पता ही होगा। खर्चे बहुत रहते हैं, डेवलपमेंट खर्चा। कमाते भी अच्छा है, हाँ कमाते भी। कोडम में स्किन चीप है, लोग लेते हैं। कोडम हर कोई फोन में चलता भी है। हाँ बनाया रहेगा ना, हम लोग ने सोच समझ के बनाया है। ये लोग चूतिए, ये लोग को बरोबर ऑप्टिमाइज नहीं किया एपेक्स वालों ने। वो भी 15-20 GB पकड़ ही ले। अबे क्वालिटी है बे, वो लो एंड डिवाइस में नहीं चलता है। लो एंड डिवाइस नहीं, 15-20 GB नहीं, 10 GB तक रहेगा शायद, सब ले दे के, क्योंकि 2 ही मैप थे ना। कोडम ऐसा मैसेज तेरे को भी आ रहा है क्या? यूज जेब्रल सॉफ्टवेयर कैजुअली सीनियर प्लेसमेंट टीम में फॉलो। कोडम 10K मोबाइल में चलता है, सिर्फ गेम साइज बड़ा है। हाँ वो लोग लो क्वालिटी में था। वो स्टारलाइट हाई अबोव द वेस्टलैंड और नाइट एंगल्स वेरी फ्रॉम द स्काई, इट्स टाइम टू टेक ऑफ द क्राउन ऑफ रोजेस, क्लेंस योरसेल्फ टू द टाइम फ्रॉम द रेड स्लीप, क्लोज योर आईज, योर गोल्डन स्लंबर, समन द वॉन्डरिंग सैंड, ड्रिंक नॉट द बिटर सॉर्ड फॉर द सॉरो ऑफ टुमारो हैव गॉन अवे। क्या हरियाली है भाई। मैं इसका एक भी स्टोरी नहीं पढ़ा कि मार्केट में चल क्या रहा है इसका स्टोरी। मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ा इसका स्टोरी। तेरे को पता है इसका स्टोरी क्या है? कोडम को भी मतलब मेरे को स्टार्ट करने का मन क्यों नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है, इसके लिए कोडम चालू करने का मन नहीं कर रहा। मेरे को लग रहा है कि एवोल्यूशन आने वाला है अभी 1 साल के अंदर गेम में, बहुत बड़ा एवोल्यूशन आने वाला है। अब क्या आने वाला है वो मेरे को नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है आने वाला मोबाइल गेम्स में। अरे मतलब कुछ नया डालेंगे ये लोग, जैसे कि अभी कुछ ना कुछ नया डालेंगे ये लोग। अच्छा बड़ा, अच्छा कुछ होगा, बड़ा कुछ नया होगा। अबे सोच ना, ऐसा ओपन वर्ल्ड गेम तो कभी फोन में खेल सकता था। इतना ओपन वर्ल्ड गेम पीसी में ही चलता था ये।
हाँ गेंशिन मेरे को गेंशिन से उम्मीद कुछ और थी लेकिन निकला कुछ और। वो अलग बात है, ये लोग को पैसा कमाने का ज्यादा है तो लंबा लेके जा रहे बहुत। अरे भाई गेंशिन वाला कितना कमाता जरा देखो तो, एक बैनर में कितना मिलियन कमाया रेडन के बैनर में 60 मिलियन ना, कितना मिलियन रेडन के, ये लोग बैनर पे कमाते साले। मोबाइल में भी सेम, ऐसा नहीं कि पीसी में अलग खेलना पड़ेगा और मोबाइल में अलग है, सेम चीज। चोरी सेम ही मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, ऐसा ऑप्टिमाइज बनाया है लोग। लेकिन क्या है, चीटिंग गलती से भी नहीं मत करना कोई, तो लड़े लगे, सारा मेहनत गया पानी में। चीटिंग इज हाईली नॉट रिकमेंडेड हियर। जमा कर जमा कर जमा कर। रेंडर पार्टिकल्स दिख रहे क्या तेरे को? रेंडर पार्टिकल्स दिख रहे क्या कहीं पे? काम कर आजा, मैं भी एक छोड़ क्या तेल लेना ऊपर है ना, वो लाल वाला वो कंप्लीट कर लेना स्टार्ट करके। अच्छा तू स्टार्ट नहीं कर सकता ना, मेरे को ही करना पड़ेगा। हाँ याद आया मेरे को। अरे भाई चैनल मोनेटाइज हो जाए यार। सौ लोग मेरा ना 1-1 घंटा रोज देख लेना स्ट्रीम, तो 100 घंटा और 10 दिन में मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। हीरो इज लाइव वीडियो भी बनाता है ना भाई, तू मेरे को बता ना, मैं वीडियो बनाता हूँ। तू कोई चीज के बारे में बता, मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। किधर गया रे? आवाज नहीं आ रहा है। तो मेरे को बता, मैं उस तू बता, मैं वैसे वीडियो बनाऊं। विश वाले वीडियो बहुत आते हैं। अच्छा नहीं रे भारी, अभी तो खोला दरवाजा। तो दरवाजा खोला है तो बच्ची। ये दिख रहा है क्या सब खड़े हैं तेरे को? तू घुस भी गया, बड़ा बेशर्म आदमी। जब बात करते चैलेंज ये किंग दशरथ निकल बाहर। प्रोसीड डीपर विद इन खेमो टेम्पल। ठीक है याद है तेरे को भाई? सही है, मुझे लगा भूल भाल गया। अरे लोग उठा मार। There is no escape.
अच्छा रिलीज करते रहे। Useless. गया किधर है? पहले लेफ्ट में क्यों नहीं गया? दिएगा। वो मटेरियल तो उठा ले। अरे हो जाता है इजी है। यूट्यूब देख के मैं तो बहुत रेयरली देखता हूँ यूट्यूब। मैं ट्राई करता हूँ, कोई रहता है तो फिर वो बता ही देता है। हाँ। हाँ तो वो क्या है कि पता है हम लोग स्किप कर देते हैं ना, वो पढ़ना रहता है। मेन वो लोग जो बोलते हैं वो सुनना रहता है, तो उसके वजह से यूट्यूब देखना पड़ जाता है। हम्म। एक तो झाड़ भर के कहीं भी छुपे पड़े रहे। नहीं दिखा तो नहीं रहा, कैमरे में तो नहीं आ रहा अभी तक। दशरथ लौड़ू आदमी का। प्रिंस ऑफ पर्शिया की याद आ जाती है सैंड देख कर, है ना? प्रिंस ऑफ पर्शिया की याद आ जाती है सब स्टैंड बैंड देख कर। कमोड बोल रहा था कैसा झाटू आदमी है। कमोड वैसे पानी पीते। कमोड में से पानी पी रहा है भाई प्रिंस। प्रिंस वो भी कमोड में से पानी पी रहा है, वही हग रहा वही मुत रहा। चारों जगह से ना। ये जल्दी जल्दी बात कर रहे भाई। क्या बता, मैं बात कर रहा हूँ और टैप 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 कर रहा हूँ। पीछे आने तेरे को क्वेस्ट में कहाँ जाना नहीं दिखाता ना। आजा लेफ्ट आजा। ठीक है, लेकिन नीचे कुछ है क्या?
मैं तो घुस जाता हूँ, पता है तेरे को। ठीक है, मार मार मार, मुझे तो दिखता है। इधर है। ना क्या तेरा है किधर? अच्छा किधर गया? लैंड आदमी ऊपर पहुंच। पर चढ़ना, मेरा गेम लैग क्यों हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे भाई उधर पकड़ना, क्या चूतिया आदमी है। Smell of treasure. Strange. ये भी सीली जैसा है बेंचो में, आड़ा तड़ा जगह नहीं जाता ना ये। ऊपर है क्या? इधर गया है बे, तू तेरे पास आओ कि मैं इधर जाऊँ? ऊपर है ना? किधर जा रहा है? अबे तू तो बाहर जा रहा है उधर। मैं तो चढ़ तो गया था ऊपर में। यार इसको मार दो। Boring.
करना क्या है? हो गया क्या? लैग क्यों हो रहा है? सेटिंग में कुछ तो कम करना पड़ेगा। तीन आई क्या आ रहा, पता नहीं क्या आ रहा। मैं मार रहे इसको। रुकने मेरे को क्वालिटी लो करने से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत लैग। क्या करने का? किधर? ऊपर ऊपर कुछ नहीं है क्या? ठीक है। तो ये लोग आंख में क्या पट्टी लगा के रखे, बच्चे लोग दिखता कैसे? मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा। बोल किधर जाने का? ना मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो मारने का ये लोग को। देर का हो गया। की बच्चा है जमीन के अंदर घुस गया। If it's useful, I'll take it. अभी किधर जाने हैं? Illusion shattered. Illusion shattered. और नीचे लेके जा रहा है। चार जगह से लेके आया वो इधर। तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा इसे।
इसलिए दवाई खाते का बदला नहीं आता है। टैप ही कर रहा हूँ दोनों उंगलियों से। हाँ बे साला ये सब आराम से तोड़ ताड़ के घुस जाने दे। मैं क्या अब तूने क्या लिखा है? लूमिन लिया है या ईथर लिया है? क्या ईथर है? अच्छा तू आ ही नहीं पाएगा, मैं वापस रिटर्न नहीं आ सकता। साला अभी नीचे घुसा फिर अभी ऊपर जा रहा है। These ruins are magnificent। एनिमेशन आ रहा है तेरे को? एनिमेशन नहीं आ रहा तेरे को? गिर गया। तू किधर है? मैं तो आ गया। मर गया। आ जाएगा। अच्छा इसे नॉर्मली इसके अंदर एंटर करते तो लॉक रहता है ना? क्योंकि आया था मैं वाला इधर आया था, अंदर जा ही नहीं रहा है, अंदर जा नहीं रहा है। ठीक है ये स्टॉर्म बंद करना रहता है क्या जो ऊपर से चढ़ रहा है? तेरा आवाज बहुत कट है। तो कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, कट रहा है हल्का हल्का कट रहा है। ऐसा है ना रेडियो पे हम लोग पुराने जमाना बात करते थे फोन पे, वैसा वाला नेटवर्क जैसा वाला। हाँ अभी बोल अभी बोल। हाँ हाँ अभी बराबर है। इसका स्टोरी पता है तेरे को क्या है? यही कर दे। आजा टेलीपोर्टर लेके आजा जल्दी। मादर चोद लोग आए। Disappear. Here. Worthless.
ये हेल्प तो दोनों आए थे हेल्प कर Ancient Egyptian technology. अभी याद है क्या तेरे सोना वोना खजाना वजाना पड़ा हुआ है भाई तेरे पास हाँ भाई कितना सारा है भाई बहुत सारा मोरा हो जाएगा तेरे पास है कि नहीं मोरा देख मेरे पास बहुत है हाँ दिया है तो सबकी जगह जाके कुछ करने का पहले वो पॉइंट पे जाने का नहीं है क्या वो पॉइंट पे हाँ हाँ बन के आ रहे इधर है वैसे तो देखने में दिख ही नहीं रहा पंखा चालू कर देंगे क्या Smell of treasure. Strange. पंखा चालू कर दिया मैंने अब क्या करना क्या ज्वाइन करूँ तेरे आ जाए इसे मेरे पास आओ क्या Empty chest. Good for storage. फन करने का क्या उसको
Do not have the clearance लिख के आ रहा है. नीचे कुछ तो है बे, वो चाहिए मेरे को. कैसे चालू हुआ बे? अच्छा तो जा रहा है ठीक है. तब मैं करता हूँ, मैं भी मूव के आता हूँ. I keep watch. You leave, you call me. I'm hungry. Let's hunt.
chest. Good for storage. क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई, अपना हाल चाल बताओ लीजन भाई। कैसा लगा जान के न्यूज़? एपेक्स की लग गए। मत रो मत, मेरे भी दिन आएंगे। गेंशिन भी चाइना के नाम पे बंद हो जाएगा एक तो। फिर बोलेंगे खेलो, कौन सा तो गेम निकला था ना वो खेलो। तो आराम से वीपीएन लगा के खेलेंगे। अपडेट पे खाली मगजमारी होगी। अपडेट 20 GB का आता है भाई।
बहुत नींद आ रहा है बे, बहुत नींद आ रहा है, गंदा वाला बोरिंग वाला साला। लेकिन क्या है, ये जगह छोड़ नहीं सकते। ये जगह एक बार आया ना तो गलती से छोड़ने का नहीं, तो आदमी पगला जाएगा। ये पूरा कंप्लीट करके निकलो। छोड़ना मतलब भाई ये जगह को ऐसा दावत देना कि भाई वर्ल्ड क्वाइज कभी भी चालू किया भाई उसको खत्म कर दो। Some of the devices in King Desert will allow you to increase the clearance level of the Scarlet Sandstone. The higher the clearance the slate possesses, the more device which can control, which will allow you to enter areas you were not able to before. Not breaking a sweat! This one will be frozen in time. Witness the power of Gugwa. It isn't time for a break yet! Get back! Can this be? My duty. Dodge this! Out of the frying pan, into the fire! Let's end this quickly! ये क्या चल रहा है? इसको लग क्यों नहीं रहा भाई? Nice and spicy! Let's not waste time! This is bad! ना ना ऐसे कुछ नहीं आ सकता यहाँ कभी भी। I woke up myself in this place and my whole body felt like it was falling apart. It wasn't even the end of it. I went to great length to finally find that oh, that's terrible. ये पतवी कहीं भी अंदर घुस जाते हैं बेंचो, तो हम लोग को इतना कांड करके अंदर घुसे। हेलो निकी, हेलो, हाउ आर यू ब्रदर? सुन ली। I'm fine. I am also fine. Yeah, do you play Genshin? What is your AR? Yes, bro, I am AR 57. I am only 45.
Do you have all the Archon character? Hello guys. I didn't pull for all like just Shogun. I don't like Zhongli and in neither time I had exam. Oh, okay. I pulled for Raiden but I lost. Everyone got Raiden but except me. Bad luck. Guys can die. That really hurt. Oh, that Body really and feel my sword. These things. I got Raiden in 43 pulls. I lost Raiden. I got Kaching instead of Raiden. So sad. Sad like. I should have built her as a DPS and could have played all the game. Bad luck. Better go for Alhaitham, bro. He good for now. Oh, really? Another problem. Let me weave you a verse. Don't get frostbite. Well, let's see if I will get Alhaitham or not. The loneliness of death. I just got Shao. I don't think I will get Alhaitham. Nice photo. 50-50 लूज किया ना तो सवाल Alhaitham मिलेगा. 50-50 लूज नहीं किया मैंने. Just following orders. मुझे अभी 20 फूल पहले मेरे को मिला. ना आपने बोला ना रेडन में नहीं मिला. शाव मिल गया ना मेरे को. मेरा पीटी अभी 23 है. शाव के बाद मेरा 23 फुल हो चुका है. Frozen. तो बेटर है देया पुल करो. न्यू कैरेक्टर है देया. ओके
दहिया तो भाई अपना क्या बोलते हैं, जीनियन की 5 स्टार है। मेरे को हुताओ नहीं तो येलन चाहिए मेरे को। नींद आ रहा है। कौन सा टेस्ट कौन सा है? Visit. आ जाओ यार, मरो यार। बस येलन बेस्ट येलन है सब और मेन दोनों। हाँ इसी के लिए तो येलन करने का मेरे को। येलन मेरे पास कैरेक्टर नहीं, अभी अभी चालू किया भाई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को गेम चालू किए। अभी 1.5-2 महीना होगा, 2 महीना होगा अभी कुछ दिन। इधर से मैं आया क्या? वो भी याद नहीं मैं किधर से आया। सही कर रहे दो यार, जो मिले दो। इस साला स्क्रीन इतना स्लो क्यों चल रहा है? मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या ये सबसे यही करने के लिए मैंने उसको ओपन किया था। रुक जा सब। और मैंने अच्छा कोई धीरे धीरे बिल्ड करो आपका अकाउंट। हाँ अभी अभी तो चालू किया भाई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बिल्ड कर अभी अभी तो कैरेक्टर मिले कुछ घंटा मेरे पास ना कचिंग थी, ना कचिंग भी नहीं थी, जिंगचो भी नहीं थी, मेरे पास कैरेक्टर ही नहीं थे। मेरे पास सिर्फ रेजर है। थोमा मिला अभी ठीक। अभी कुछ 1-2 महीने में मेरे को बहुत सारे कैरेक्टर मिले, लेकिन बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। जो मेन अभी 4 कैरेक्टर है, एक टीम बिल्ड हुई है, दूसरी टीम बिल्ड करना भाई। आया तो लाइक वाइक कर दो यार। रेजर मैंने 53 तक यूज किया था। सेम मेरा भी तो है हाल चाल है। 45 तक कुछ है ही नहीं मेरे पास कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर रेजर है। डीपीएस अच्छा कैरेक्टर है, बस इसका क्या है कि क्लेमोर यूज करना पड़ रहा है। उसके बाद चाइल्ड मिला, फिर शोगन पर मस्त चल रहा है। शोगन अलग है, शोगन का लेवल ही बाहर का अलग है यार। शोगन है, शोगन की बात अलग है। क्या कर लिया मैंने? मेरे को टेलीपोर्ट वेपन ओपन करना है। नीचे क्या है भाई? दे रहेगा नीचे। मतलब इतना सारा एरिया ना एक्सप्लोर करते करते तो जोन गांड सकते। स्कैरब चलो लोग उधर भागे, मैं चोरी नहीं कर सकता उधर से खड़े हो गए। बोल रहा है चलो फिर मिलते हैं। लेजर फिजिकल बना? हाँ फिजिकल ही बनाया है मैंने। लेजर फुल फिजिकल है मेरा, मेन डीपीएस है।
फुल DPS फुल फिजिकल अटैक मारता है। हाँ भाई गुड नाइट भाई गुड नाइट। मेरे को भी बहुत नींद आ रही है, क्या करूँ। खाना खा के मैं भी सोने का सोच रहा हूँ। Yeah, I am here. The more, the merrier. Know my soul. Rain outlines your fate. Oh, so sorry. पीछे आ, कोने में आ। Let me amuse myself. Get back. The more, the merrier. You really know how to get me going. Know my sword. Witness the power of Gugwa. Dodge this. Look at me. Just once more. What's the hurry?
Time to get freeze. The smoke will be frozen in time. Let's do this now. Now you're testing my patience. Get back! Gotcha. I taste blood. No escape. We'll meet again. Leaving so soon. No, my sword! Let me weave your verse. Oh, so sorry. Can't run from death. Can't run from death.
Nice and spicy! Rain outlines your fate. Cool it! You're toast! No, my sword! Freeze! ठीक हुआ। अरे भाई माइक ठीक ही था। माइक खराब नहीं हुआ था भाई। I'll race you there! I'll race you there! Bet
She can't keep up with me. Opening a chest is like unwrapping a gift. Opening a chest is like unwrapping a gift. Get him! Let it rain. Rain cutter. Don't get frostbite. Dodge this. Huh? Cool it. No, my sword!
smoke will be frozen in Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Get back! What's the hurry? What's the hurry? Boba, get them! Let me weave you a verse. These things useful? माइक ठीक हुआ। 1 मई को हैकर बैन एपेक्स वाले बोल रहे हैं। भाई गेम ही बंद करने की बात कर रहा, तो ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। 1 मई को हैकर बैन उतना टाइम क्यों लगा रहा है? आप ही कर देना। Oh, so sorry.
चलो भाई भूख लगी है, हम खाना खा के आते हैं। बहुत जोर की Cool it! Empty chest. Good for storage. That was dodge this! Ha! Ah! Ha! Ha!
Wow, Liyue Harbor looks very different from when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lantern Ride after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great, let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Hey, everyone! Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Well, feels like I've been chasing this Iridescence Tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? Yes, please! No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Keqing and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. That's the spirit! See? Even the Traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Rite Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot.
But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about the senior of yours Xinyan mentioned just now, is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. What's the hurry? This is a peaceful neighborhood. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern rite, are we? You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival! An old lady go. like me wouldn't know all much into a about bag that for sort you. of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. All into a bag for you. All into a Times bag for you. change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness All into a bag gracious! for you. You're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along now.
Don't let me hold you up. Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. I'll do that for you. All into a bag. The wind. What's the hurry?
doesn't look good. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried GENSHIN leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, here you go. You'll end up falling asleep in the grass again. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Ah, Paimon will do the honors. What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? It's definitely an ambitious plan. If
you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. It may be a little difficult to make this happen. Oh? Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. I will. Okay, I should be getting back. If Yo-Yo stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Everyone, I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. Thank you, Yao like me, dress like me, walk, talk, and act like me. It just might be today. Together sometime! Though the clouds may darken and light turn to gloom, still the moon over the chamber roams. I didn't know you were such a slacker.
Come on, let's get... We're not Greetings, traveler, Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Kuching. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. Yay! That's awesome! और हूता हो जाएगा मेरा हूता और शाम मेरे को निकल जाएगा उतना प्रीमोजम 1 महीने में 100 वेज तो कर ही लिया था मैं Please. शाव निकालूंगा The शाव Qixing have a निकालने के duty बाद to फिर deal हूता with matters निकालूंगा such as these. We have merely moved things forward to the next step. On a more personal note, I am an avid supporter of all things new and innovative. As such, it is my privilege to पिछला work with विश you on मैंने this 100 exciting विशेस project. किए थे 100 Thank you so 100 much, का Kuching. पिटी था 100 का I'd become quite discouraged after our recent failures पूरा and क्या was बोलते हैं expecting लेकिन the same साला तभी outcome मेरे once को खाली again, कचिंग so मिली थी मेरे को I ये didn't dare to मिली get my hopes up. 100 विशेस Never करने in my के बाद भी wildest ज्यादा ही dreams किया could I have था 100 imagined this going so smoothly. It's like a dream come true. Right. Time for me to call in the performers. तो क्या To वो stage a क्या concert वो at a high-profile किस्मत event like खराब this is करके a रखा है rare opportunity. कुछ मिलने वाला We'll make नहीं sure it's a night to remember. Yes! Our music band's finally getting fired up! Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. Oh, that. That can wait for another time. Oh. Ganyu? What's wrong? They told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't worry about me, Ganyu. Your time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Lantern Rite. Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an Adeptus. What do you think? To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the Adepti myself. I am part human and part Qilin. The Qilin is an illuminated beast. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before, trying to find out where I belonged. Did you say the Adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin? Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? So it's not just artistic license? You bet they're real! Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to our network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment? Will you be able to make time? I can probably get through everything in 2 days, as long as I don't sleep. Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching. Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In that case, 3 days. All right, I can work with that. If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people.
I'll feel much more at ease with your company. Of course. Okay, then let's meet back here in 3 days. Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get to the bottom of this. You're all so helpful and kind. I just... पैसा चाहिए पैसा. Just Help think, करने को पैसा. imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. Wouldn't that be amazing? It'd be such a happy reunion. And that's exactly what this festival's all about. You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern ride a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too! I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? Music sounds nice? Truth be told, the question of what music means to people is one that... Lady Yuhang? Baiwen, what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to take appropriate action. I understand. In that case, Yeah, Kuching, you're busy enough as it is. There's a ton of different things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Well, she will handle it. With the Traveler on the case, it's as good as dealt with. Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and let me know. Will do! And say hi to Ningguang for us! you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Good luck. Let's revisit this question after the concert. The strange tune was coming from around here, right? But Paimon doesn't hear anything. There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who in their right mind would come out to a place like this. So, it's you two. Yelan! How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack! You look pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. Fair enough.
Ah, you're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. Catch the wind. The stuff by the door is in pretty good condition, though. It can't have been too long ago that someone was last living here. The doors and the windows are all fine, so there definitely wasn't a break-in. This place is completely empty. There's nothing valuable left here at all. How strange. It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Yelan, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, well... Paimon gives up then. Paimon's got nothing. What about you? Give up as well? Yep. It's not obvious at first sight, that's for sure. To be honest, I was only able to put it all together because of some background knowledge about this area. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. The bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again, and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. Whew! That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. The important thing now is to find this copycat criminal. On any other day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So basically, if we want to find the culprit, we just need to follow Yelan. Mm-hmm. As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. Freeze! Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction.
Huh. Their pace is increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. Again, and so close to Lantern Ride, too. 'Tis not the season for their antics. Come on, let's round them up. Hey! Who are you? Where did you come from? The evidence is conclusive. Okay, confess and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. Really? You're open! Gotcha! Curses. Sounds like you're not all talk after all. Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say! Please have... Tell us everything. You have one chance. And I'm warning you. Don't make... I won't, I swear! You know, so... Lantern Right's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So I don't have the guts to break into somebody's house. Wow, you're really going to complain to us about that? No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay. Continue. I racked my brains trying to think of what I could do, and eventually, I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did, and they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy, I couldn't resist. It was completely wrong of me, I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition, and it'll be like it was never gone. Please, give me a chance, huh? Let me make it right. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Lantern Right behind bars. Yes? Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've
देखो मैं चेक कोई है
I keep watch. You leave, you call me. Empty chest. Good for storage. Those memories. So dark. Outlines your Rain cutter. Go in! Evil conquering! Here! Get back! Here! Here! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Know my sword! Rain outlines your fate! Witness the power! Worthless! Die! Get back! Worthless! Here! Rain cutter!
outlined your fate. Witness the power of God. Here! Get back! Let me read your verse. Let's light it up! Lament! Here! Here! Get back! Here! Adventure time! Weak! Rain cutter! Here! Get back! Here! Worthless! Here! Everybody stand back! Get out of here! Out of the way! Adventure time! Adventure time!
I smell rabbit. Keep up. Conquering! Weak.
I'm not finished my research. Take me back. Those memories. Right now, right here. Go!
Lupica! My Lupica! Hello, Adil Sen. Hello. How are you, brother? Oh, ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! I'm hungry. Let's hunt. Benny's adventure team, assemble! Oh. Oh. Or not. मेरे आते ही सीडी रोल आई एम फाइन चलो मेरा 12-3 हो गया शो योर रिजल्ट बिल्ड प्लीज माय रिजल्ट बिल्ड इज शिट माय रेजर इज नॉट बिल्ड आई एम स्टिल बिल्डिंग माय रेजर आई कैन नॉट शो यू and I am at AR45 so don't expect any of lucky तो हूँ आपके लिए आ गया अबे पूरा बैग फुल हो गया है आई एम एक्चुअली बिल्डिंग रेजर नाउ व्हाट इज योर AR ब्रदर अरे सब कुछ बोल कुछ ये तेरा क्या बोलते तेरा R9B का लिंक भेज तेरा जो योर चैनल करके रहेगा ना उसका लिंक भेज जरा तू R9B गेमिंग के ऊपर जा और तेरा जो है ना योर चैनल करके है तेरे चैनल का लिंक भेज मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक भेज मेरे को शाव दिखता नहीं है साला ऐसा बुड्ढे जैसा छुपा रहता है चिमिनावा लगाना पड़ रहा है यार इधर ये देख साला फालतू आर्टिफैक्ट दे रहे यार
कौन सा लगाऊं बता, ये दोनों में से कौन सा लगाऊं? ये लगा के रखता हूँ, 2 पीस सेट लगा के रख। Will you pull for Daya? No, I will pull for Yelan. I'm thinking about Daya. I have to try the trial match first then. मैं YouTube छोड़ दिया, मार्च से न्यू अकाउंट से करूंगा, तब सेंड करूंगा। अरे बावले, उसके लिए नहीं चाहिए, तू भेजना, लिंक भेजना। YouTube छोड़ दिया वोड़ दिया वो नहीं बोल रहा, तू लिंक तो भेज। तू अभी जो जो जिससे चैट कर रहा है ना, वो वाला लिंक भेज। मेरे को कुछ दूसरा कुछ ट्राई करने का है। मार्च से न्यू अकाउंट से करूंगा, तब सेंड करूंगा। शिमिनावा चलेगा, 2 पीस वाला लगा देना। और 2 पीस शिमिनावा भी दे सकता है। 2 पीस तो लगाया मैंने शिमिनावा। ये क्या है? क्रेट है। अच्छा पीस ये लोगों को देने में गांड जलती है, लेकिन मातर चोद है ना। क्रेट रेट क्रेट डैमेज वाला ये सही है ना। ये पीस अच्छा है। टू पीस इसका लगा लेता है, एम्बलम का। एचपी है माँ का इसका साथ में। इंस्टा आईडी टेल करो। अरे टेल क्या, डिस्क्रिप्शन में देख रहेगा क्या? एक काम कर, तू डिस्कॉर्ड पे भेज, मैं इंस्टा आईडी बाद में बताता हूँ। रुक, अभी थोड़ा इसका पीसेस लगाने में सरदर्द है मेरे। क्या टेनेसिटी अच्छा पीस देते नहीं हरामी लोग साले। ये पीस गंदा है यार, इसको अपग्रेड भी नहीं कर सकता मैं। और ये एचपी देख, इसका क्रिट डैमेज क्रिट रेट दोनों है। दिमाग का भोसड़ा करके रखा पीसेस लगाने में। वेदर में क्या है? कुछ भी लगाना पड़ेगा भाई। अटैक परसेंटेज
क्या गंदा पीस दिया है यार, दिमाग का भोसड़ा करके रखा है। सुनावा नहीं है। इंस्टा रिक्वेस्ट कर लो, डिस्कॉर्ड डिलीटेड है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, इंस्टा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। आईडी तेरे को मिल गया क्या बे? हाँ, कौन से वाले पे? अबे ऑफिशियल आईडी का मेरे को पासवर्ड ही याद नहीं है, मेरे को पीसी में ऑन करना पड़ेगा बे। रुक जा 2 मिनट। एक काम पे वाले आईडी पे भेज, रुक 2 मिनट रुक। वो वाला तो एक्सेप्ट करता हूँ मैं, 2 मिनट रुक। ये वाला आईडी का एक काम कर, ये वाले आईडी पे भी भेज दे, उसका पासवर्ड याद नहीं है मेरे को। काम कर ये वाला आईडी ना। ये वाले आईडी पे भेज, रुक भेज रहा हूँ। हाँ शेख वाला है ना, शाह फैजल शेख नॉर्मल है। डिस्कॉर्ड इंस्टा रिक्वेस्ट कर लो। हाँ इंस्टा उस पे तो कर दूंगा, इस पे अभी फिलहाल के लिए भेजो। ये वाला आईडी मेरे को, मेरा आईडी का पासवर्ड ही याद नहीं है। ये वाले आईडी पे भेज। वो वाला मैं फोन पे ऑन करूंगा तो करता हूँ। और इतना गंदा पीस दिया। भेज दिया। किसके लिए? वैसे रुकना, मेरे को टेस्ट करने दे, उसके बाद ही तेरे को पता चला जाएगा। अगर टेस्ट काम नहीं किया तो फिर गया तेल लेने, मैं बताऊंगा भी नहीं। मैसेज भेजने बोला था। अच्छा रिक्वेस्ट में चले जाते हैं। टेस्टिंग पहले कर लेने दे, उसके बाद मैं देखता हूँ कि काम करेगा तो तेरे को पता चल जाएगा। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को स्क्रीनशॉट्स चाहिए रहेगा तेरे से, देखने का कैसा कैसा दिख रहा है मेरे। सेटिंग में कुछ चेंजेस करने के। अभी मैसेज कर, अभी अभी मैसेज कर। अभी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा तो पता नहीं, या कितना देर बाद रिफ्लेक्ट होगा। अभी मैसेज कर तो दिया है मैंने। आ गया। ये मेरे को कभी किया नहीं, मेरे को पहली बार किया। चलो हो गया। चुप। परमिशंस मेरे को पासवर्ड याद है। सेटिंग का अब मॉडरेटर को ये नहीं करने का, क्या बोलते हैं? राज किधर है? राज राज और उलजम्मू भाई किधर है?
I smell rabbit. राज सो गया मेरे को लग रहा है। मेरे को पहले सब सो रहे हैं। हाँ मेरे को भी लग रहा है राज भी अंगड़ाई ले रहा था और बाकी लोग आवाज नहीं। गेम का साउंड आ रहा है कि नहीं रे भाई? गेम साउंड तो आ रहा था, फिर ऐसे क्यों दिखा रहा है? आ रहा है मेरे को ना रेड का आर्टिकल चेंज करने का था भाई। क्रिट्रेट वाला कोई पेल फ्लेम चाहिए ना। फाइव स्टार आई नहीं। क्रायो डैमेज बोनस फिजिकल अटैक पर्सन चाल। अबे एचपी डिफेंस अटैक क्रिट क्या फालतू देख। फालतू पीसेस भाई, फालतू पीसेस देख। आप पे गो टू चैनल वाला ऑप्शन आता है ना अकाउंट के ऊपर। एक सेकंड, गो टू चैनल वाला आता है क्या? अरे हाँ भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने कभी नहीं किया भाई। 32 सब्सक्राइबर, 2 वीडियो डाला है। एनएनए गुच्ची बैलेंसिया लोड़ा लसर क्या लिखा है ये? Valorant montage, check description. Hello guys, thanks for watching. This is the first ever montage video. Hope you like the game. And comment down below how was that and do like and subscribe if you like. अरे ये वाला तो मैंने देखा नहीं, चल सब्सक्राइब कर दिया तेरे चैनल। मॉन्टेज बनाया भाई तूने, क्या बात है। तेरा बाप आया, ये क्या है? डेविड दे गया। अरे मैंने कभी ट्राई नहीं किया भाई इतना। मैं तो भाई ये सब ट्राई नहीं किया। गो टू चैनल वाला वही मैं पब्लिक चैनल में देखते रहता था। मैं ये करके क्या बोलते हैं, मैं उन लोग का नाम टाइप करके सर्च मारता था। साला इधर तो डायरेक्ट है गो टू चैनल करके ऑप्शन है, मेरे को पता ही नहीं। का जो बिल्ड है काम करता हो, किसका 5 स्टार लगाया मैंने। इतना हाइड्रो डैमेज वाला ये क्या है? एलिमेंट्री मास्टरी में कौन सा सेट लगाया भाई? एग्जाइल। तो डैमेज क्रिएट है इसमें ना। तो फुल कर दिया। क्रिएट हाँ तो
अच्छा पीस मिले तो मैं लगाऊं। लेकिन एचपी में साला ये लोग ने दिया है ये सब लग गया ना। क्या सब लग गया ना? सबको लगा कहाँ घंटा है, पीसेस अच्छे नहीं मिल रहे। भाई अपग्रेड करने के लिए पैसे भी नहीं है साला, सिर्फ अपग्रेड करता नहीं। आर्टिफैक्ट लगाने का सरदर्द कितना खतरनाक है यार। तू इसके अंदर थोड़ा हेल्प कर भाई, ये इसके क्या लगाओ यार। जॉन्गलिंग बिल्ड बता मेरे को, जॉन्गलिंग में क्या क्या लगाना पड़ेगा मेरे को। मैंने इसे नॉर्मल लगा के रखा है और उसको बिल्ड नहीं किया मैंने। जॉन्गलिंग जॉन्गलिंग के लिए क्या क्या लगाने का है बता जल्दी फटाफट। जॉन्गलिंग के लिए कौन सा लगाना पड़ता है, कौन सा फ्लावर, कौन सा मतलब कौन सा ये लगाना पड़ता है यूनिट। बोलेगा चले गया क्या? बोलेगा बोलेगा। चले गया लगता है वक्त।
सो जा। अबे तेरे से कुछ पूछ रहा था, मैं भूल गया। तेरे से अब भी कुछ पूछा था, तू भाग गया था। कुछ तो पूछा था तेरे से भाई।
एक सेकंड, अरे आपका कल आपको सवाल किया था, आप ये दे दो, क्या पूछ रहे थे? अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक्सेलेरेटर भाई आप अपना यूट्यूब चैनल पे जाके इसे इसने भेजा ना, एक्सप्लेन आर भी एक्सप्लेन, आप अपना लिंक भेजो, लिंक एक्सेलरेटर उल्स करके जो है ना, ऐसा अपना चैनल पे जाओ, उसका लिंक भेजो। मैं जो पूछ रहा था मैं भूल गया था, भूल गया हूँ, जो भी पूछ रहा था मेरे को याद नहीं है। अच्छा लिंक क्यों मांगना, चैनल फीचर किधर? रुको रुको रुको, अरे हाँ 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 रुको एक सेकंड। अच्छा हाँ, बात तो सही बोला, लिंक क्यों मांगना, मैं खुद ही जा सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम लोग को खुद लिंक भेज, खुद का लिंक भेजना पड़ेगा। गो टू चैनल करके जा सकता हो, लेकिन खुद से मांगना पड़ेगा, वो दूसरा चीज आता है, अगर खुद से मांगते हैं तो एक दूसरी चीज आती है। चैनल फीचर किधर? आप अपने ऐसे चैनल पे क्लिक करो और ऐसे जाओगे ना, मतलब यूट्यूब पे क्लिक करो, ऐसा यूट्यूब गए, यूट्यूब पे जाके फिर बाद में ऐसा आप अपने ना इस पे दबाओ, क्या बोलते हैं, लोगो पे दबाओ, आपका जो लोगो है प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद योर चैनल करके आएगा, योर चैनल पे क्लिक करो और फिर जो लिंक आएगा उसका लिंक भेज दो। चैनल लिंक इंस्टा या डीसी पे? ये तो इंस्टा पे है ही नहीं, डीसी का पता नहीं इनका। डिस्कॉर्ड पे हो आप? डिस्कॉर्ड पे डिस्कॉर्ड पे तो वो है ही नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? ये कैसे ऐसे सेम है ना, एग्जैक्ट है ना ये? HTTP ऐड करो पहले। ओ ठीक है, मैं करता हूँ। शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसे ही हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ी, हो गई। नट बोल्ट का भी सिंबल इनको भी आ जाएगा। चलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैसेज करो, अभी मैसेज करो। ब्लू टिक आएगा अभी, ब्लू टिक बोल्ट, नट बोल्ट। ये मेरे को पता नहीं था कैसे करते, मेरे को बहुत लेट पता चला। यही करने का तो ढूंढ रहा था भाई, मेरे को कि पता ही नहीं था ये कैसे करते हैं। मैं ढूंढते ढूंढते पगला गया, फिर अब भी जाके मिला, फिर मैं भूल जा रहा था। एक है हफ्ते 2 हफ्ते पहले। आपने कुछ और एक्सेस दिया बहुत पहले। हाँ वो तो, वो भी एक्सेस ठीक है, लेकिन ये एक्सेस दूसरा, वो कहीं यूट्यूब स्टूडियो का था। हाँ हाँ, वो तो इनसाइड डेटा, इनसाइड डेटा लीक मत करना बस। बच्चे लोग को इनसाइड डेटा लीक कर मत देना। मजाक कर रहा हूँ। वो इनसाइडर, उसके अंदर इनसाइडर डेटा मिल रही थी। I'm hungry. Let's hunt. वो कहीं अभी तो इसका तो पता भी नहीं चल रहा कि बात कौन कर रहा है। ऐसे स्ट्रीम एलिमेंट्स और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा।
हाँ वो पूरा एनालिसिस है, पूरे चैनल में कितना व्यूज आते हैं, क्या आता है, वो सब है। एक्चुअली में देना यही था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कैसे देते हैं, अभी पता चला मेरे को। चलो आर्कन क्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं, स्टोरी सुनो। The creature stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. इसके अंदर थैंक्स फ्रेंड्स क्या, मेरे को तो मैं कितने जमाने पहले मेरे को देने का था, मैं कब से देख रहा हूँ अभी मेरे को 2 हफ्ते पहले पता चला। hands full taking care of the village's elderly and children. और कल मैं आपसे ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी डाल रहा था, उसके अंदर ईमेल आईडी नहीं डालने का था, चैनल का लिंक डालने का। Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I एपेक्स ask if such टीपीपी पे sandstorms पब्लिक are बढ़ common? गया है, आपको पता है, न्यूज आने के बाद लॉबी भरा है। क्या मजाक कर रहे हो? न्यूज आने के बाद लॉबी भर गई? Increasingly severe कैसे? and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. देखना पड़ेगा मेरे को भी। Irminsul's withering वर्ल्ड चैट causes तो उसके ना withering zones फोन in the किससे बात forest, करे कुछ घंटा and पता चलता है। sandstorms and earthquakes here in the वर्ल्ड desert. चैट पढ़ने में मजा, मेरे को तो समझ में नहीं Everything in आता the वर्ल्ड चैट natural में। world is inextricably connected to Irminsul. These regional ट्विटर पे ये symptoms सब can न्यूज बहुत indeed जल्दी be a आता है, reflection ट्विटर of में Irminsul's ट्विटर में present यूज नहीं state. करता। अकाउंट बना के Everyone in पता our नहीं village कितने needs to लोग take 10K care of 20K themselves. डॉलर डाल के रो रहे हैं। अरे बाप रे। Speaking of which, हाँ why पैसा कौन haven't I डालेगा seen a कि मैं तो मैं single village पैसा नहीं keeper since I got फ्री here? का दोस्त तो करेगा। Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? पैसा डाल के तो भाई BGMI में भी Does your बैन हुआ था तो curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars मेरे को नहीं पता, exiled तुम लोग here ट्राई by the करो। academia. टाइम आउट कैसे Most देते मेरे of को भी them नहीं are पता। scholars who lost their देखो कैसे टाइम आउट sanity देते हैं भाई। after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. अच्छा हाँ, अमेरिकन ये लोग बाहर They're वाले लोग forcibly गेम में exiled पैसा to the बहुत लगाते desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. हैं। उल्टा सीधा बक बक किया तो टाइम आउट दे देंगे। उल्टा सीधा तो नहीं करता, खाली 2-3 चीजें ही बोलता है वो। Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. इंदौरी ने ही No one in कुछ the village 15-20 has ever हजार seen them leave. खर्चा किया है If you're भाई। planning to stay around the village 15-20 for the हजार next few days, पूरा कमाया भी I'd नहीं होगा appreciate it if you could keep an eye out एपेक्स for से। them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. ये कैसे दिया The भाई? Matra are the ones responsible कैसे for देते their मेरे को भी exile. पता भाई। स्ट्रीम Now एलिमेंट्स that और you're no longer टाइम with आउट भाई them, आर देन are बी you गेमिंग trying फॉर to 300 alleviate सेकंड्स। your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my ऑलरेडी उसका position टाइम or आउट है 5 identity. मिनट या 10 मिनट। Oh, you're the नेम former में क्लिक General करना होता है। Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your इसका नाम help. पे क्लिक करो तो ऑप्शन आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? देखो तो। पुट यूजर इन टाइम आउट। अच्छा ऐसा है क्या? फिर ऑप्शन आता है, आया स्ट्रीम एलिमेंट्स और टाइम आउट बाय एक्सेलरेटर फॉर 300 सेकंड्स। सही है Is it सही। because you're reminded of Hypatia? Oh, these अबे राज आएगा, राज को कर scholars. देना। राज तो First सोने they गया मेरे को lose their लग रहा sanity, now है। this! राज सो गया। We need to help get them back home, safe and sound. But,
Is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. टाइम आउट दे दिया भाई, टाइम आउट दे दिया बेचारे को। स्ट्रीम एलिमेंट्स से तो 2-3 चीज ही करता, ज्यादा कुछ करता नहीं। उसका सिर्फ ओवरले लगा हुआ है। I'll be grateful for the वो भी assistance. एपेक्स का लगा हुआ है। No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. म्यूजिक बनाने का मेरे पास है नहीं। डाल लो ये लोग आर्कन क्वेस्ट में यही सब करवा रहे, इधर से उधर, इधर से उधर। नाहिदा खाना खाने के बाद भाई बहुत थोड़ा। Although I've sent myself into exile, आलसी हो गया। I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in the corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. The soft green light? A mad Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information मैं आज than I ढूंढा do. एक लाइक बॉट। आप कुछ what दिन do you पहले make of बोल the रहे थे story? लाइक्स का झोल मिला मेरे को। मैं नहीं बोला था, मैं नहीं बोल रहा था, मुझे लगा कि कोई झोल कर रहा है कि लाइक्स कैसे आ रहे Lesser हैं। Lord Kusanagi. लाइक बॉट वो सब बॉट ये कर लेता है, मतलब ट्रैक कर लेता है यूट्यूब डाल के, मतलब चैनल का मतलब चैनल के लिए ठीक नहीं है वैसे। लाइक बॉट ये सब लाइक बॉट या कोई भी बॉट, It's not so much that I don't believe you. क्योंकि अगर I'm अभी just struck by लाइक your बॉट reasoning. डाला फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो Lesser सारे Lord लाइक चले जाते, Kusanagi, the current ऑटोमेटिकली हटा Dendro देता और icon. यूट्यूब को पता चल Is जाता she है। really active in ये भी आ Sumeru? गया, सुन तेरा चैनल का वो भी The भेज दे। academia has always placed far greater importance तेरे on the चैनल का late भी भेज greater वो। Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored तेरे Lesser चैनल का Lord लिंक भेज। Kusanagi, and I've never मतलब had योर any चैनल reason पे to जा doubt their और फिर बाद में views. उसका लिंक मेरे को भेज। In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanagi and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. ए इसको एक्सप्लेन करो रे, क्या क्या इसके सर पे पसीने छू रहे हैं। How should Paimon put it? अरे तेरे She's a good Archon who's चैनल kind पे जा, and तेरे wise. उस पे क्लिक कर, क्या बोलते हैं बैनर पे, प्रोफाइल पिक पे यूट्यूब के। अच्छा मैंने आपको वीडियो का लिंक डाला अभी, बट ऐसे आया आपको वीडियो में एम्बेडिंग एनेबल नहीं है,
तो चलेगा नहीं करके लॉल। अच्छा, अरे आप डिस्कॉर्ड पे कहीं नहीं हो क्या? I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. चैनल का लिंक भी अबे अभी तो आंसर बता दे अलाइथम का वेपन। Look in your eyes. अलाइथम का वेपन का आंसर बता दो, रुक अभी बताता हूँ। I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanagi. अलाइथम किसी ने पुल किया है? अलाइथम अपने में से किसी ने पुल किया है? To think, our Archon has been amongst us this entire time. All right, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Stop. इसको देखना पड़ेगा। But easier said than done. कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तेरे को आंसर बताने के लिए तेरे को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो देखना पड़ेगा। Maybe we can start by knocking on some वीडियो डाल रहा हूँ doors. मैं। Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad कर scholar? बीच में ये देखा, ध्यान से देखा, ये देख, ये जब अभी देख प्ले करेगा ना, देख उसका वेपन देख, हाँ देख दूसरे हाथ में जो नीचे की तरफ हाथ में वेपन देख, अलाइथम का वेपन है देख, हाथ में रखा, और देख उसका स्वॉर्ड कोई और यूज कर रहा है, लेकिन अलाइथम का वेपन अलाइथम के पास ऑलरेडी है। देख दिख रहा है? Why do you call him Grandpa? और देख एक और वो पूरा वाला भेज, पूरा मतलब वो लात से मारता है। अबे दिखा क्या? देख हाथ में अलाइथम का वेपन मिल गया। और देख जब वो नीचे फेंकता है जो स्वॉर्ड, वो भी देख जमीन पे, देख जमीन पे स्वॉर्ड फेंकता है, वो भी अलाइथम का वेपन। लेकिन देखो आयरन स्टिंग यूज कर रहा है। वेपन वो कौन सा है? एंकर है, प्रोटोटाइप एंकर है ना? हाँ, आयरन स्टिंग है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है। चलो रिकॉर्डिंग खत्म, समझ लो बच्चों। Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. तो ये है आंसर क्वेश्चन का। I wanna find my grandpa. I swear I'll help. भाई इतना दिमाग खाया इस क्वेश्चन ने। Ah, so you're the one who was अलाइथम के पास अलाइथम का वेपन ऑलरेडी है। House. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill मैंने मेरे intent. इंग्लिश के टीचर को भी वही पूछा। Alhaitham wasn't kidding about सही में? Matra having sharp senses. घंटा समझ में आ रहेगा, उसको खेलना पड़ेगा। He's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa और went. क्या बोलते हैं, रेडन का भी सेम है। If you don't रेडन believe जब me, अपना you can ask अल्ट Miss यूज करती है, Candace. बॉस यूज करती है, तो रेडन का भी वेपन रेडन के पास ही रहता है। वो अपना असली वेपन ही निकालती है अपनी छाती से। All right. But first, let's confirm the facts with Candace. चलो कैंडिस का कैंडी खाने। तो इंग्लिश टीचर का जवाब क्या था वैसे? इंग्लिश टीचर को भी मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला रहेगा। इतना सिंपल इंग्लिश बोला मैंने। इसका मतलब है कि उसका वेपन उसके पास है। Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back ये already? बिल्ली है, पता है? बिल्ली के दो कलर रहते We हैं। just wanted to confirm something वेट with you. के कैंडिस का Do you know a कैंडी। boy by the name of Isak? I had a feeling कैंडिस he'd एक go बिल्ली looking है। for you. कभी भी बिल्ली के आंख देखेगा ना छोटे में, तो बिल्ली के आंखों के कलर दो रहते हैं। Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back.
Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment मुझे in the पता नहीं city. था कैंडिस लड़का He was है। raised by his grandfather. कैंडिस लड़की है बे, दिखता नहीं है लड़का कैसे Unfortunately, कौन बोला it लड़का was है? only a few years before his grandpa passed away. कैंडिस का कैंडी। Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for बोला him so किसने he कि could कैंडिस survive. लड़का है? कैंडिस लड़की है, नाम ही Later, कैंडिस है। an elderly mad scholar कपड़ों देख arrived at ले the और village. दो चीज देख ले उसका। Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus अब often कैंडिस को spied on the लड़की man. नहीं देख पाऊंगा, जब भी उसको However, देखूंगा कैंडिस the का scholar was कैंडी याद है। unkempt in appearance and incoherent in अबे जरूरी speech. थोड़ी है कैंडी लंबा Although रहता है, Isak referred गोल to भी the तो man रहता as है। his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. नींद आ रहा He है भाई, even मैं took थोड़ी देर में भी Isak to बंद the करूंगा entrance of गेम। the village, where he बहुत नींद आ रहा patiently है। taught the boy the names of the stars, अरे भाई भाई and गोल भी और accompanied लंबा Isak भी। until he fell asleep. हाँ वो शीमेल है The next वैसे। morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace अबे आज and would थर्स follow अच्छा him आज all the वेडनेसडे time, था, asking him आज things like, थर्सडे है। Grandpa, want me to take you somewhere fun? Or, Grandpa, could you tell me वो stories about शीएल the के सो stars जाओ, again? 8 आवर हो गए। हाँ नींद आ रही है भाई, बहुत नींद आ रही है। Paimon feel really ये हो sad. जाने दे फिर It सोता हूँ। seems like they both deserve so much better. 8 घंटे से खेल रहा हूँ मैं। Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship ऐसी and रोज खेलते regret. रहा तो तुम लोग इतना कैचअप कर लेगा But क्या even तुम? so, कैरेक्टर we नहीं है must ना, still रेडन नहीं मिली continue यार। on अब with our रेडन पता नहीं lives. 1 साल बाद उसका बनर है। It's also एक my 10 फुल reason for करके जाता fighting. हूँ। 10 I फुल देख must के जा। continue to protect this land. शायद मेरा हो गया रहेगा। Still grandpa was probably Naida from the look on sign of it is probably connected. Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his ये word and इकलौता doesn't get गेम in our निकला way, था जो फोन में we can ओपन take him वर्ल्ड था along. भाई। ऐसा गेम किसी Perhaps ने you are more compassionate than I कैर gave you नहीं किया तो credit करना for. नहीं है। Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. ये भी कुछ सालों बाद ना, ये भी गेम ना जैसे क्लैश ऑफ क्लैन जैसा। अरे लेकिन क्वालिटी बात कर रहा हूँ, क्वालिटी देख। माइनक्राफ्ट तो भाई अलग चीज है, क्वालिटी देख, क्वालिटी ग्राफिक देख, क्वालिटी देख, क्रिएशन देख। इसके अंदर क्या बोलते हैं, सिनेमैटिक की बात अलग है, कट सीन्स है। Isak? Oh, मैटर it's you करता है। guys. Oh, We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? गांडपा की बात, तेरे Wow. गांडपा की Thank बोलते you गांडपा। so much. भाई माइनक्राफ्ट को कुछ नहीं बोलने का। अरे माइनक्राफ्ट को मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि माइनक्राफ्ट एक टाइम पे था माइनक्राफ्ट, अब माइनक्राफ्ट नहीं रहा। Let's ask the local residents some माइनक्राफ्ट questions का भी टाइम first. निकल जाएगा भाई कुछ दिन में। माइनक्राफ्ट में स्टोरी है क्या कुछ? सोलह सौ हुआ क्या? 1600 मारे पुल मारू क्या? पुल मारू क्या? बोल। अलाइतम के लिए पुल करूं? तू बोलेगा तो पुल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं एलन के लिए सेव करो। अबे यार अलाइतम के लिए लालच आ रहा है, मतलब थोड़ा स्टाइलिश कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर चाहिए मेरे को। कैरेक्टर लेके रखने का, बिल्ड करूं ना करूं, लेकिन मेरे को कैरेक्टर रखने का। वीरन के लिए तो हो जाएगा ना सेफ, जब तक पीटी भी तो बन जाएगा।
येलन का आर्मपिट और मस्त है। ये कैसा बेशरम आदमी है। बाल वाल रहेंगे उधर, पता नहीं कितने दिन से साफ नहीं की रही। बोल हाँ बोल बे, हाँ बोल खाली। हाँ बोल, हाँ मेरे को हाँ सुनने का, मेरे को चाहिए अलाइतम चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा। अरे हाँ बोलना, मेरे को करने का, हाँ बोल। अरे बोलना, हाँ बोल के जा। एक 10 पुल मार देता हूँ ना। अरे मेरे पास बहुत टाइम है यार, हो जाएगा मेरे को। अबे यार मेरे को लग रहा है मिलेगा मेरे को, ये पुल में मेरे को 2 पुल में मिल जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरा पीटी देख ले, ये देखा लास्ट मेरे को ना शाव मिला था, ठीक है 50-50 लॉस के बाद, और मोस्टली सबको मिल ही रहा है शाव। ठीक है ठीक है, मार दो फिर। क्योंकि डेंड्रो का कैरेक्टर एक अच्छा मिल जाएगा ना उसको। टिग्नारी विग्नारी ऐसा कुछ है नहीं, कोहली है साला डेंड्रो कैरेक्टर में, और कुछ है नहीं मेरे पास। समझो समझो इसका। चलो एक रिकॉर्डिंग पे डालें और ये मारे। दुआ कर दुआ कर दुआ करो। नहीं मिला। चीची तो है ही नहीं मेरे पास। क्या देगा वही देख रहा हूँ। मातर चोद है एक नंबर। बच गए। कहाँ कुछ मिला भाई, लास्ट में देता है ना। 4 स्टार वो दिए स्ट्रिंगलेट्स। बोलना मत, कैरेक्टर चाहिए मेरे को। मादर चोद साला 10 मेरा पुल। कैरेक्टर तो दे देता कोई, साला कैरेक्टर दे देता मेरे को। मेरे को याओ याओ चाहिए थी, याओ याओ। अरे मैं मोस्टली याओ याओ के लिए पुल कर रहा हूँ, मतलब अलाइतम मिले ना मिले, कम से कम याओ याओ मिल जाए, क्योंकि मेरे को शॉन्गलिंग का C1 कर देगा। इसे माता चोर है यार। दिमाग का भुसड़ा है मेरा। पर्पल ये क्या दिया। मैं भी याओ याओ के लिए पुल किया था, अलाइतम मिल गया। तेरी किस्मत अच्छी है भाई, मेरी ऐसी खराब किस्मत नहीं है। क्या हरा भरा हो गया। मेरे को याओ याओ चाहिए। ओहो जिन है क्या मेरे पास? जिन नहीं है मेरे पास, जिन नहीं है मेरे पास। अरे मेरी चैट, हाँ देखा मैंने भाई, देखा मैंने। तूने बोला मिल गई, ठीक है। ब्लू है क्या ये? 4 स्टार दे दे कोई तो, 4 स्टार दे दे। देखा मैंने तेरी चैट, देखा भाई, सुना मैंने तूने जो बोला। जीन नहीं है मेरे पास, पता है तेरे को। जीन नहीं है मेरे पास। बहुत छोटा है इसका, थोड़ा जूम नहीं होता क्या?
अरे ध्यान से देख, इसको देख, हाँ इसको देख, ठीक है। अब फिर इसको देख, निंगवान को देख, निंगवान किधर है? ये देख, एनिमेशन पे ध्यान दे। जीन का फगोनियस दे दो। जीन को अपग्रेड थोड़ी करने वाला हूँ मैं। ये किधर जीन? कौन सा फोवोनियस है भाई? फोवोनियस रहना भी तो चाहिए मेरे को। फोवोनियस नहीं है इधर मेरे पास, है ही नहीं वेपन। जो भी है सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड है। वो छोड़ो, जिन पे करो एंड होल्ड स्किल यूज करो, स्विच करो। हाँ मेरे को एक चाहिए था, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। We may leave at any time. तब वो छोड़ो, तब देखना मजा। अच्छा रुक, देखता हूँ मजा देखता। अरे बाबा रे बाबा, अरे रे रे रे, ये क्या था? ये एंगल से देखूंगा मैं। अरे एंगल चेंज कर। अरे हाँ भाई, You need to watch out for सेव हवा में उड़ना जाए। स्टैमिना कंज्यूम करता है भाई। Don't waste my time. You need to watch out for any signs. Useless. क्या देखे तो? You've been a naughty boy. ओह, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। जूम करके दिखा रहा हूँ तेरे को, जूम करके। You need to watch out for any signs of earthquakes. साला इतना गंदा नोटिस करता है, बड़े बेशर्म लोग हो गए। अच्छा, लेजा का साइड टू साइड, जीन का ऊपर नीचे। You're in for a little shock. You're in for a little shock. Let's spark things up a little. Come a little closer. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. गजब गजब। Useless. Make sure to keep up. ये लोग वो ये वाले कैरेक्टर का सेम ही है। तो टेलीपोर्ट होती है। ये तो भाई प्रीस्टेस है। निंगवन फ्लैट किधर है बे? निंगवन का देख पहले तू।
कौन बोला फ्लाइट है? ये देख, ध्यान से देख। बाल देखना बहुत बड़े हैं। ब्लैक है, इसका तो कपड़ा ही है। जीन को 4 पीस बीबी दे दो, मैं फ्रेंड लिस्ट में हूँ क्या? है ना, तो फ्रेंड लिस्ट में इसी बात करा तो फ्रेंड लिस्ट में नहीं। तूने जीन को बिल्ड किया है क्या? किधर है जीन? नाइनटी कैच पकड़ा रहेगा इसको। तेरे पास ये है वेपन? वेपन मिल गया तेरे को? मेरे फ्रेंड इसमें है क्या? मेरे को जीन मिल गई बहनचोद। Everything is negotiable. Acceptable. कैरेक्टर कलेक्शन बढ़ रहा है। कहाँ, मेरे पास सिर्फ रेजर था, रेजर जिनियन थी। अभी कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर बढ़ रहे मेरे। एक और 5 स्टार मिली मेरे को जी। हाँ भाई, खुला है। अच्छा, आ रहा उठा। जीन मस्त है। जीन को बिल्ड करूँ क्या? कैसी है? चल दिखाए डॉक्टर। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोला है वही, क्या नाम है, इन्फेक्शन। अभी तो ठीक लग रहा है, पहले नॉर्मल लग रहा है। ये तो बोल रहा है कि अगर नहीं के साथ खाने के लिए बोला है साइक्लोट्रापिक। हाँ बोला वो डिहाइड्रेशन। पानी वानी नहीं पी रहे हो? पानी पी रहा हूँ, तब फिर भी कहता है जबरदस्ती पी लो। हाँ ये तो पी लो, ये हमेशा बॉडी में स्टॉकिंग करना होगी। और 1 घंटा आधा घंटा बढ़ते जाओ रोज। मैं भी चालू कर रहा हूँ अभी। शाओ के अलावा भी मस्त है, बिल्ड कर लो जीन को। अभी कहाँ मेरे पास, तो शाओ को तो देखेंगे। शाओ को तो अभी किया है 70 तक। अब जीन को बिल्ड करने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बुक्स देखेगा? बुक्स है ही नहीं मेरे पास। तूने बोला बिल्ड कर लो। देख अभी मैं चर्बी देख मेरे में कितनी है, मैं पहले डालूंगा। बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करो। क्या एक एक करके हूँ, करके असेंड कर लो, बिल्ड कर लो जिनको।
बस हो गया, आप ज्यादा नहीं खर्चा करूंगा इसके ऊपर, बाद में करूंगा। जीन बहुत मस्त है शाओ के लिए। अच्छा शाओ के साथ जीन को यूज करते हैं क्या? मतलब रिकॉर्डिंग पे डाला ही है, स्टॉप नहीं किया। गंदी गंदी चीजें रिकॉर्ड हो गई है। 40 तक तो कर लो। चल तू बोल रहा तो कर लेते। आपको बिल्ड करने के लिए हमेशा मॉन्स्टर जाते हैं। मॉन्स्टर के गेट के सामने मिलेगा, है मेरे पास शायद। अच्छा नाम क्या है इसका? अरे मेरे पास कपड़े भी है क्या इसके? इसका कपड़ा मेरे को कब मिला भाई? क्या था आइटम भाई इसका? मॉन्स्टर के गेट पे तो नाम क्या है? डैंडेलियन सीड। कितना चाहिए? 3 ही चाहिए। मैं तो ये जमा ही नहीं करता भाई। वो हवा मैं एनिमो कैरेक्टर बंद कर दिया लेना, तब से मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है। तेरे राइट लेफ्ट में मिलेगा। भाई इसका छुप गया। होगा बच्चा, सीओ पिटो। गलत कपड़ा है इसका। Ready for anything. अगली आप इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मेरे को एक बैंड ये मिला, मैं भी यूज करूंगा। बड़े बेशरम लोग हो तुम लोग ना, एक मौका नहीं छोड़ते। पर्पल दे दे। बड़ा मिला कहीं से। देख झाटू जैसे स्काई ग्राइंडर शॉट देते रहते। झाटू स्वॉर्ड दे देते हैं लोग, वेपन दे देते हैं। 4 स्टार 5 स्टार वेपन दे देते हैं। वही चीची तो सबको चीची मिलती रहती। चीची कचिंग मिली है, चीची मोना कुछ तो दे देते। रखे रहते। कलेक्शन चाहिए मेरे को। मैं अभी जा रहा हूँ मेल लिखने। चल एक चीज ट्राई करना। ये क्या इधर? तो जाता है क्या? शॉप पे और 5 ले लिया भाई। वही तो 5 पड़ा हुआ था। ले लिया, लाई लिया, लाई लिया, लाई लिया। तो मेरे को याओ चाहिए, ठीक है। मेरे को एक हीलर तो चाहिए कम से कम फिलहाल के लिए। शाओ के लिए एक हीलर चाहिए, एक दूसरी टीम के लिए। तो याओ तो मेरे को कैसे भी करके चाहिए। मैं अभी दूसरी टीम बना रहा हूँ। दूसरी टीम चलो आज को क्या बोलते हैं, आज का दिन खत्म करते हैं। नहीं तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा पीसी लगता है खुद से बंद हो जाएगा। है क्या नहीं?
What's the hurry? ऐसा तुम लोगों को करने आता है? ऐसा देख ऐसे रिंगर रिंगर रोजी ये सारे सब ऐसे ही करते हैं। तो चड्डी पहना साला लड़की वाला गेटअप मार रहा है। चलो भाई लोग गुड नाइट, नींद आ रहा है मेरे को। कल मिलते हैं, कल स्ट्रीम चालू करेंगे। कल अगर बिजी नहीं रहा तो कल जल्दी स्ट्रीम चालू कर देंगे। हमारा कमर वमर सब दुख रहा है बैठे बैठे। वन पीस वन पीस वन पीस वन पीस। चलो भाई गुड नाइट, गुड नाइट बदो बंदी बंदा बंदी लोग। न्यू प्लेयर, यस ब्रदर, न्यू प्लेयर। I am new player. Just started 2 months ago, brother. Granger is live. I started 2 months ago, brother. Thank you. Please add me. Or send me. I will add you. Send me your UID. I will add you. It's been 8-hour long stream today. 8.5 hours. Thank you, brother. Thank you. Granger is live. I really appreciate it. UID याद नहीं है पर नेक्स्ट स्ट्रीम पे पक्का दे दूंगा। ठीक है, मैं मेरा लिख सकता हूँ ना, मेरा लिख देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके रख लो। मेरा किधर है? 8 चलो भाई मिलते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत नींद आ रही है भाई, कल मिलते हैं। भाई थैंक यू भाई, लाइक कर दो यार, बहुत ही कम लाइक है, गरीबी चल रही है थोड़ी। इतने लंबे लंबे स्ट्रीम करते कुछ मिल पब्लिक ही नहीं आ रही है। मेरा यार 45 ही है, बहुत मेहनत करके बहुत लंबा लंबा खेल खेल के बढ़ाया है मैंने। अभी तो सिमोरी का स्टोरी क्वेस्ट चल रहा है। कॉपी पेस्ट करके रख लो, रिक्वेस्ट भेजना भाई। नाम क्या है? नाम बता दो तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। कौन सा नाम रहेगा आपका? मेरे अचीवमेंट्स बहुत 351। चैज़म मेरा कितना परसेंट हुआ? चैज़म फुल कर लेते हैं। मेमोरीज ऑफ द हार्ट तो वो ज्यादा फैंटास्टिक वॉइस प्रोलॉग कंप्लीट साइन अप इवेंट। भाई कितना सारा बाकी है मेरा। इसमें मिला काकाशी हातके। अरे भाई नारुतो फैन, सेम हियर ब्रदर। बट उसके पास उसका रिने क्या बोलते हैं शारिंगन नहीं रहा, और क्या बोलते हैं अपना उसका रिनेगान नहीं रहा। सासुके का रिनेगान गया, काशी का शारिंगन गया, अब पता नहीं किसका क्या क्या जाएगा। कैरेक्टर में क्या है भाई?
ओह, मेरे Wait. पास इतने सारे कैरेक्टर नहीं है। No. ये सब तो मेरे को पता ही नहीं, जैसे देखना पड़ेगा। नाइदा तो भाई अब पता नहीं इसका बैनर कब आएगा। भाई यार शोगन मेरी हार यार। चितोरी है ना वो काफी है। टाइटन, अरे यार टाइटन ब्रो हेलो ब्रो, चितोरी है ना वो काफी है। चिदोरी, अच्छा चिदोरी, हाँ चिदोरी काफी है झटका लगाने के लिए। बेनेट, हेलो, चिची मोना, रेडन मॉमी। या आई डोंट हैव रेडन मॉमी, आई लॉस्ट 50-50 रेडन का मीसा तो आया का क्यूटी पाई काजुआ बहुत इलेक्ट्रो है एनिमो कैंडेस शीमेल वॉन्डरर Nilo's dance. Bro, I am ending the stream. Also lost to Raiden mommy. Same. Sad story. I already pulled 10 minutes ago. Check. I got go 20 minutes behind. Go 20 minutes behind. I pulled 10 pulls just now. I lost. I got some shitty weapons, 4-star shitty weapon, and I pulled standard banner. I got green just now. See, I just got green right now. See, I just leveled it up to 20. Now I'm not doing that. See, just now I pulled all like 15 pulls, total 15 pulls I pulled. Now I will pull tomorrow after 1600. 1600. So I will need 300 plus 7, 900 primogens. Then I will pull. You missed the pull. Do you want to see the pull video? Let me show you the pull video. प्रीमोजेम्स जमाओ 25 के प्रो चाहिए होंगे 5 स्टार मिलने के लिए। 25,000 भाई गरीब आदमी, मेरे को मिलता है मैं पुल कर देता हूँ। मेरे को याव चाहिए, अलाइतम मिले या याव मिले, तो इसके लिए मैं बैनर पुल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 15 के जमा लिया सिर्फ जोंगली के लिए। जोंगली अब कब आएगा? येलन है, येलन हुताव है, येलन तो चाहिए ना भाई। एक येलन तो चाहिए, जिंगचो से अच्छा है येलन। मेरे को येलन करने का है। मैंने अभी जमा किया था, शायद 2 महीना बाद आ सकता है। 2 महीने बाद आएगा। जोंगली मिलेगा पुल करेंगे। अपने पास इतना है। अभी तो स्टोरी कुछ किया ना, मेरे पास प्रीमो तो बहुत पड़े रहेंगे। इतने सारे अचीवमेंट्स करने के मिलते रहेंगे मेरे को। जहाँ तक है कि मेरे को तो कमी नहीं है। वैसे जो न्यू प्लेयर्स है उसको लोग को तो प्रीमोस की कमी नहीं रहेगी। जो पुराने प्लेयर है वो लोग को तो प्रीमोस का जमा करने के लिए पता नहीं छोटे मोटे कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। चलो भाई सोने चलता हूँ यार, कल मिलते हैं यार। बहुत सुबह जॉब पे भी जाने का है, लेट हो गया है, बहुत लंबे देर से कर रहा हूँ। मिलते हैं कल। चलो गुड नाइट बोलो यार, अच्छी नींद आनी रहो। टाइटन गुड नाइट ब्रदर। ग्रैंगर इज लाइव गुड नाइट। और जो भी है लैसिया फंटर गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टाटा।